We are going live on Facebook. We are going live on YouTube. I'll give you the countdown. Okay, we are live, Daniel. Three, two. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I hope you're all doing well. Umeed hai aap sab khairit se honge. Welcome to the Way in Pakistan ka number one mixed martial arts show. आज हम live हैं. पहली दफा I believe हम live हैं with an official हमारे on the mic के YouTube और Facebook channel में आज हम National Fighting Tournament 3 के बारे में बात करना चाहते हैं जो of course ऐसे Gardens काला शकाकू में under the PMMAF बहुत ज़्यादा चीज़ मैं इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग डू लाइक डू कमेंट वो सब करें आप नीचे हमें बताएं इस वीडियो के बारे में थॉट्स एनीथिंग यू वांट टू नो सो ऑन सो फोर्थ सब्सक्राइब कीजिएगा ऑन द माइक हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा यू हम लोग पाकिस्तानी एमएमए को कवर कर रहे हैं पाकिस्तानी फुटबॉल कवर कर रहे हैं जान लगा के कवर कर रहे हैं ज्वाइनिंग my co-host for the evening, the man who I love speaking about all things Pakistani MMA. He is, of course, a legendary fighter for Pak MMA, still going, still the MFN champion of it is Mr. Kratos Uloomi Kareem Shaheen. But now, not just that, he is becoming one of the voices, one of the minds, one of the hearts, one of the souls for Pakistani MMA. Jo ab hame next generation mein leke ja rahe hain. Uloomi, thank you so much for doing this. Man, I'm doing good. Thank you for always having me over, always giving me the time and the platform to speak to all these lovely people. And it's on only good things for now, man. Only good things from now. Ladies and gentlemen, making his long-awaited return to an on-the-mic video. He's got to Cyprus, but I'm never letting him rest. Ladies and gentlemen, the incomparable, the indestructible, the amazing Omar Fasi Bashir. Kya haal hai, brother? Fit ho? Assalamu alaikum, everybody. Oh, thank you. A round of applause from Kratos. I mean, I'm actually in the land of Kratos as well, Greek-speaking country में हूँ, so आपके birthplace में हूँ अभी. So Max Mughals has joined us by in the chat. Hello to him. But I'm excited for my The Way In debut after 4.5 years. But I'm excited to talk about NFT3 today. Yes, sir. Let's go. Just as मैंने कहा है NFT के बारे में बात कर रहे हैं आज all throughout this live stream. We have a lot of questions that people sent in. आप लोगों ने सवाल भेजे हम उनके as promised जवाब देंगे. But before we get into anything, NFT के बारे में बात करते हैं. Of course, 4 दिन लगातार fights हुई हैं. 240 plus fights हुई हैं. All in SA Gardens across 2 venues. Pre-quarterfinals, quarterfinals, semi-finals, grand finals across 16 weight classes. It was absolutely crazy. मैं वहाँ 4 दिन था. I got a good look at everything close up. बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं which were very interesting. But Uloomi, of course, from your perspective, like I said, you're still an active fighter. You're still somebody who is fighting training every day in one of the best gyms in the world, Fairtex. लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान Thailand to kind of, be close to you and be under that learning tree that you have fought. And of course, you've cornered so many Pakistani guys. You basically, आप वो एक बंदे हैं जिसका opinion शिद्दत से जानना चाहता हूँ. हमने बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं की up till this point. पहली दफा हम बात करें. Just at a glance, just overall, what are your thoughts about NFT3? How did you feel about it? What would you say? First thing that comes to mind about this whole endeavor? Man, first off, mad props and kudos to the entire team of NFT for doing what we'd never thought would ever happen in Pakistan. This is such a milestone. It's only going to get better, but it's such a milestone that we've achieved. And big thanks and kudos to Babar Raja and SA Gardens for doing this amazing job. क्योंकि मैं यहाँ पे अभी भी इस टाइम भी मैं होटल के लॉबी में बैठा हूँ. 1 चैंपियनशिप का इवेंट है परसों सुबह. उसमें मेरा टीममेट लड़ रहा है मार्क, तो उसको मैं कॉर्नर करने के लिए आया हूँ. और जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिस तरह चल रही हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में उस कैलिबर की उस लिहाज की अभी तो नहीं हो सकती. बट देन अगेन जिस तरह मैंने देखा, जो behind the scenes मैंने जो stories देखी सबकी, कि जिस तरह से हर कोई push कर, everyone's pushing towards a successful event. It's just mind-blowing. It's amazing to see that. So congratulations to all the fighters, all the athletes, the entire management, all the sponsors, every single person, every single stakeholder of SA Gardens and NFT.
बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स हम इस पूरे सेशन में काफी ज्यादा चीजें बात कर रहे होंगे कि बेहतर कैसे हो सकती हैं, हम काफी ज्यादा होंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, स्टैंडर्ड्स को मजीद अपहोल्ड कैसे कर सकते हैं। घुसने से Hmm. पहले आई थिंक बहुत जरूरी है रिकग्नाइज करना कि ऐसा एफर्ट करना, ऐसा इवेंट खड़ा करना, इतने ज्यादा फाइटर्स, लाइक वी सेड 1,000+ fighters from were assembled under one roof, which is absolutely insane. इस चीज को करना ही is like a very very big gargantuan effort, और उसके लिए हमें दाद देनी चाहिए. We should be celebrating and congratulating the PMMAF and Babar Raja for being able to execute sure. this. All of the problems aside, I think Uloomi, you've seen Pak MMA, आप MMA की जर्नी स्टार्ट से फॉलो की, क्योंकि आप Pak MMA के स्टार्ट से हैं. You are literally one of the pioneers जो केज में उतरे for the first I time, am fought. Pak MMA, you can say. Yeah, literally, you are pocket because you've been there from the start and you're here till now, and you will be there. You will be one of those beacons of light, pocket, maybe, who's leading the light for other people to follow. Even myself, like, I credit a lot of my opportunities and my growth to Coach Ali Sultan, Coach Sham Karim. You guys gave me my first opportunity. You guys have always been there to support on the mic. So how amazing was it to see something like this? कैसा लग रहा था देख के, यार इतने ज्यादा fighters, इतनी ज्यादा fights 4 दिनों में हो रही हैं. Had you ever thought when you were starting, जब शुरू करे तक भी आपने सोचा था कि ये भी होगा? यार जब शुरू किया था उस टाइम तो कुछ सोचा ही नहीं था. अगर सोचा होता ना तो अभी तक हम यहाँ पे नहीं होते. सो दैट इज आई थिंक द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, दैट हमने जो भी किया बगैर सोचे समझे किया. और अभी भी मेरे ख्याल से जो सोचना समझने वाला जो काम है वो भी अगर बाबर राजा बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करते तो शायद आज NFT 3 नहीं होता. So mad kudos and props to him कि उन्होंने इस तरह से मेरे ख्याल से मतलब जिसको बगैर सोचे बोलता हूँ, he just took a step, he took a step and he just went with it, and this is such a marvelous thing, such a beautiful thing for the combat sport athletes. क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पूरी दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता किसी एमेचर एथलीट को इतना hefty प्राइज मनी दिया जाए, और पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट के अंदर इवन प्रोज को भी इतना प्राइज मनी नहीं मिलता जितना NFT देता है. So this is such a huge opportunity, such a huge I'd say thing to chase for a lot of the almost all the athletes. This is going to open a lot of doors. Yeah, and I mean इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब देखो, मतलब इतना बड़ा प्राइस पूल है, 5 लाख रुपए है टूर्नामेंट जीतने के लिए, राइट? इट्स अ वेरी बिग सम. उससे क्या हो रहा है, आपके जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के फाइटर्स हैं, जो आपके टाइक्वांडो, कराटे, जूडो, बाकी डिसिप्लिन्स, इवन बॉक्सर्स, ऑफ कोर्स रेसलर्स, जो सारी बेसिक प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन्स है मार्शल आर्ट्स की जो बाकी स्पोर्ट्स में अप्लाई होती हैं, होती है, अब वो फाइटर्स इधर आना चाह रहे हैं क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज हुआ कि दिस इज द बिगेस्ट प्राइज पूल पॉसिबल, विच big expansion and a boom in so many in terms of the numbers of athletes that are competing in NFT every year. But like there's also been a lot of talk about, yeah, there's 5 lakh rupees to be given for each weight class. Some people say that's a bit too much. Do you understand? आपको इस argument की समझ आती है क्या? 5 लाख कुछ ज्यादा amount है to give, and do you think that it's being spent properly? Like it's one of the questions that we got from the people. बेसिकली मेरे ख्याल से ना अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में इस स्पोर्ट को ट्रिगर कर सकती थी तो यही चीज़ है. द थिंग सिर्फ देखो, ये एक वेट क्लास को अगर देख लो 5 लाख की वजह से आप जो है ना कहते हैं, तो तकरीबन कितने 16 वेट क्लासेस यू सेड, राइट? 16 वेट क्लासेस, एंड लेट्स से 16 वेट क्लास ओनली फॉर गाइज, तो वो बनता है ऑलमोस्ट 8 मिलियन. या मैथ्स ठीक है गलत है? हाँ, 4 million. Yeah, 8 million. yeah. अच्छा ठीक है. मेरी भी मैथ्स बहुत बुरी है. I'm sorry. मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ. Sorry. But yeah, it's a lot of money. It's बहुत ज्यादा पैसे. Yeah. It is a lot of money. ठीक है, 8 मिलियन. अब आपको पता है कि 8 मिलियन जो है ना एथलीट्स को मिलेगा, तो आप देखो एक किसी भी इवेंट में क्रिकेट के खास तौर पर अगर कोई भी ले लो, तो अब उसको किस तरह से जो है ना, हाउ क्रिकेट वाज brought into the mainstream was with money. ठीक है, कोई एक ना एक ऐसी वजह ज़रूर चाहिए होती है जो चीज़ आपके उस स्पोर्ट को जो है ना बूम कराए, उस स्पोर्ट को ग्रो कराए. पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा था. अहमद मुश्तबाज भी निकले, महमूद रजाज भी निकले, अब्दुल्ला चांडियोज भी निकले, उलूमी करीम्स भी निकले, हर किस्म के जो है ना अच्छे बड़े छोटे बड़े हर किस्म के नाम निकले, लेकिन नथिंग हैपेंड. स्पोर्ट वाजंट ग्रोइंग एज मच. थोड़ा बहुत प्रोग्रेस आ रहा था लेकिन इतना नहीं हो रहा था जितना
5 लाख प्राइस के पीछे लड़ने के लिए जो पूरा साल जो एक एथलीट मेहनत करता है उस तरह से जो ग्रो हुआ वो नहीं हो रहा था। तो हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा क्रेजी स्टेप चाहिए होता है और कहीं ना कहीं से आ जाता है कि it helps in growing the sport, and that is exactly what has happened, and I'm glad this has happened. Obviously जिनसे कुछ नहीं होता, जो कुछ कर नहीं सकते, वो तो यही बोलेंगे कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, but this at the end of the day this is just another incentive for the fighters to do better, to perform better. इसके अंदर भी अगर मैं होता तो मैं उसको प्राइज मनी थोड़ा कम करके इंसेंटिव के तौर पे बोनसेस देता है कि यार अगर आप स्टाइलिस्टिकली फिनिश करते हो, आप एक अच्छी फाइट दिखाते हो, फिनिश करते हो, जिस तरह वन चैंपियनशिप करा है, तो उसमें जो है ना मैं वो बोनस देता और उसको कवर अप करता। Yeah, for sure. And I think bonus centric जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उससे यही होता है कि फाइटर के अंदर से एक तरीके से डर, क्योंकि अगेन ये एमेचर्स हैं, ऑल्दो इस साल हमने बहुत ज्यादा नॉकआउट्स देखे हैं, बहुत क्रेजी नॉकआउट्स देखे हैं. हसनैन एम नॉकिंग आउट ज़ेब हसनैन वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. खिज़र रहमान गेटिंग knocked out in the semi-finals was nuts. So I mean, Sajjad Khan knocking out Abrar Saki. I mean, all of these knockouts were like just so crazy. Like they were, and it just goes to show not just the one knocking out, but even the one getting knocked out. They were willing to take a risk and kind of make it an exciting fight. Or bonus centric वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं. But at the same time, इसमें for example अगर आप एक जो counter argument वो ये है कि यार 5 लाख अगर आपने लगाना है एक फाइटर पे तो is it smart? और ये एक बहुत पुराना इकोनॉमिक्स की डिबेट बन जाती है, क्या क्या आपको वो सारे पैसे पकड़ा देने चाहिए, और शुड यू गिव लाइक अ 3 लाख उसका विदहोल्ड करो कि उसको बाहर कोई कैंप करने का अपॉर्चुनिटी मिले और व्हाटएवर. मेरे ख्याल से 5 लाख है तो उसको दो, ही शुड बी एबल टू स्पेंड इट हाउएवर वे. बट जस्ट टू पुट दिस टू रेस्ट, आई थिंक आई एग्री विद यू एज वेल कि यार ये जो बड़ा इंसेंटिव है पैसों का, इट्स ड्राइविंग आउट टैलेंट फ्रॉम every corner of the country who wants that shot at championship gold. And I think that's very important. Definitely, and to wrap it up, ये सिंपल सी एक बात है कि आपको वो पाकिस्तान में एक टर्म यूज किया जाता है ना, किसी का बाप मत बनो, या मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं है, जो हर कोई बोलता है. So it's just simple as that. You don't have to tell someone or teach someone how to use the money. वो उनको दे दो, उनकी मर्जी कि वो उस 3 लाख को या उस 5 लाख को या 2 लाख को, जितना मर्जी है. लोगों की बहुत मजबूरियां होती हैं, हमारे मुल्क में हज़ारों की मजबूरियां होती हैं, लोगों ने कर्जे उठाए होते हैं, और कैंप के लिए जिन्होंने कर्जा उठा के जो है ना अपने न्यूट्रिशन वगैरह का कैंप के खर्चे पूरे किए होते हैं, तो वो लोगों को लोन्स वापस करने होते हैं. और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो भी चीज़ उनको करना है वो खुद करेंगे. दैट्स देयर जॉब. उनकी जिम्मेदारी है कि वो सीखें कि यार किस तरह से हमने जो है ना अपने पैसे को मैनेज करना है, किस तरह से हमने अपना कैंप करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब उन पर डिपेंड करता है. सो लेट द एथलीट्स ग्रो ऑन देयर ओन एज वेल. I see it. And I So think before we अगर wrap it I'm up, आपसे compared, yeah, go ahead. Go ahead. Sorry. No, go ahead. Before we wrap it up, एक सवाल है हमारे पास कि from Shazib Ijaz. So they ask recognition for finalists. Given the current structure, it appears that the second finalist in particular does not receive any compensation. Could there be a budget allocation to acknowledge the efforts of both finalists, fostering increased motivation and competitiveness? और इसके साथ भी हमें एक और सवाल है कि why are MMA fighters so poor? So just to add to the conversation of ये 5 लाख देने चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बंदा argument करा कि गरीब क्यों हैं MMA fighters. I think Uloomi bhai, you can answer this very well. Of course. First thing, जो पहली बात की उसकी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल NFT3 में ही थी कि when Sajid Kotoshi said that you guys took my 20%, but fine, but I don't know if my opponent's getting anything, so give my 20% to my opponent. That was a beautiful thing to say. That was a beautiful gesture. I was honestly not expecting that of Kotoshi. He's my boy, but I was not expecting that of him. But I was like, when he said that, I was like, wait, what? Wow, this guy is amazing. He won my heart once again. तो ये चीज़ है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई इंसेंटिव सेकंड प्लेस के लिए भी होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि फिर वो बन जाता है सेकंड प्लेस के लिए अगर इंसेंटिव होगा तो लोग कहते हैं खैर सिल्वर आ गया तो 50,000 तो आ जाएंगे, 1 लाख तो आ जाएंगे. सो द हंगर फॉर द गोल्ड नीड्स टू बी देयर, जिसके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक थोड़ा सा टफ लव टाइप का है, लेकिन बट दिस इज व्हाट्स गोइंग टू सेट स्टैंडर्ड्स हाई, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू सेट द बार्स हाई, कि आप जब तक गोल्ड नहीं लेते आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. तो वो हंगर जो है ना, अब हर एक बंदा जो अपनी फाइट हार जाता है, टूर्नामेंट्स आउट हो जाता है या सेमीफाइनल फाइनल कहीं भी हार जाता है, उसके दिल में ये होगा कि यार मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे भी जा सकता हूँ, मैंने वो गोल्ड लेना है. I have to become the NFT champion so I can get that $500,000 prize money. So that's going to drive, them in doing more. What do you say about this, Daniyal? Agree. And I think देखो जो वैसे अगर आप ग्लोबली देखो IMF से कंपेयर
IMF के स्टैंडर्ड पे जाना चाहते हैं, हम उस स्टैंडर्ड पे ऑपरेट करना चाहते Mhm. हैं. IMF में तो there is no prize money at all. It's just कि you're going for the gold, silver, bronze, and it's your local federation and your own personal problem how you're financing and what you're getting out of it, right? So फिर भी it's actually prize money in place hai in the first place. I agree. I don't think there needs to be consolation in that sense much or whatever. But again, I also understand that argument and where it's coming from. As for that question, why are MMA fighters poor? I don't think that's framed properly. जिसने भी सवाल पूछा इसमें basically बात जो actually पूछने वाली है कि why is the large majority of people in Pakistan poor as opposed to कि specifically MMA fighters क्यों? क्योंकि MMA fighter जो बनता है बंदा, I mean, they're people from well-off backgrounds as well. From well-off backgrounds as well. Poverty is something that we aren't bothered with until we have to face it. So Yeah. that is generally a socio-economic condition Pakistan, जिसके बारे में unfortunately हम लोग शायद इतना कुछ कर नहीं सकते, करना चाहते ही नहीं है, जो भी Yeah. उसका जवाब है. But it's not like MMA fighters now, a lot of them at least are getting richer and richer with every passing year because there's Yeah. more and more financial Not opportunities richer, but presenting them doing way even within better. Pakistan. Yeah, comparatively richer, I guess, is the right terminology Yeah. for that. Yeah. And I think ये जो फाइटिंग का जो एस्पेक्ट है ये सिर्फ उसी में आ सकता है जिसके पेट खाली हो तो जो है ना खाली पेट बहुत काम करवाता है. सो दिस द काइंड ऑफ थिंग जो एक आम आदमी सोचता है कि यार मैं लड़ूंगा. एक आम आदमी जो हम उस गरीब तो नहीं बोलेंगे लाइक गरीब की भी मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं लेकिन फाइनेंशियली Yeah. जो है ना इतना स्टेबल नहीं है वो मैक्स ज़्यादातर वही लोग जो है ना एथलीट बनते हैं बिकॉज उनको पता है कि यार हमने हार्डशिप्स देखी हैं फिजिकल हार्डशिप हमने देखी है हम ये वाली चीज़ हम कर सकते हैं. ठीक है हम Yeah. 2-2 3-3 दिन भूखे रह चुके हैं और साथ में जो है ना मजदूरी कर चुके हैं तो हम ये क्यों नहीं कर सकते. ठीक है ये इसमें तो और बेहतर Yeah. है किसी को 2 मुक्के मारो और जो है ना 4 पैसे कमा लो. तो ये तो 10 मिनट Yeah. में जो है ना 50,000 अगर कमा सकता हूँ तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है. सो दैट गिव्स देम द ड्राइव दैट गिव्स देम द मोटिवेशन. उसके अलावा ये है कि व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट कि मुल्क के ये हालात हैं कि हर हर किसी को जो है ना अपनी पड़ी हुई है. एंड अभी 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 ये नहीं है कि हर एथलीट यू कैन से गरीब है या फाइनेंशियली जो है ना इतना वो स्टेबल नहीं है. ये है कि वो एथलीट्स जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते उनके अंदर ड्राइव और हंगर ज़्यादा होती है इसीलिए वो शाइन ज़्यादा करते हैं. वो दिखाते ज़्यादा हैं Yeah. कि यार मुझे ये पैसा चाहिए. वो लड़ते उस इंटेंसिटी के साथ हैं जिसकी वजह से आप हमें लगता है कि जितने भी फाइटर हैं सब गरीब हैं क्योंकि साहब नामी गरामी जो हैं वो दे आर चेसिंग दैट मनी व्हिच इज व्हाई दे आर फाइटिंग दैट हार्ड. Yeah. Uloomi, so एक बहुत interesting talk के इर्द-गिर्द हमने जिस तरह का of course 5 lakh का cash prize pool is very good. It's very tempting और यही हमें ऐसी चीजें चाहिए, incentives चाहिए कि लोग आके पाक MMA में compete करें, पाकिस्तानी MMA fighters. बट एट द सेम टाइम अब इसकी वजह से एक रिवर्स इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या बन सकता है ये शायद हमें दिखना शुरू हो गया. लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, राइट? अब मैं नेम स्पेसिफिकली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों की तरफ मैंने देखा है ऑन थोड़ी सी क्रिटिसिज्म आ रही है कि आरवी इस तरह मतलब ये एनएफटी के सिस्टम के थ्रू क्या हम फाइटर्स एमेचर रहने की इंसेंटिव दे रहे हैं एज अपोज टू टर्निंग प्रोफेशनल, क्योंकि ओवरऑल अगर सीन को देखा जाए वी नीड मोर एंड मोर प्रोफेशनल. Lakh a cash prize है, somebody would want to keep competing in NFT for 5 years as opposed to compete 2 years and then go pro. इस वजह से अब काफी ज्यादा फाइटर्स की तरफ क्रिटिसिज्म आ रहा है जो काफी अनफेयर लगता है. लाइक फॉर एग्जांपल इमान खान केस. इमान खान इज अ फाइटर, वो भी एमेचर है, शी डज नॉट वांट टू टर्न प्रो येट. वो एनएफटी खेलेगी, क्यों नहीं खेलेगी? उसका हक है खेलना. शी इज एन एमेचर फाइटर, शी इज गोना डू दैट. नाउ अ लॉट ऑफ गर्ल्स दैट कम इन टू द because of the quality of female, and we're going to talk about, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे फीमेल एमएमए की क्वालिटी के बारे में. वो अगर एक एमएमए फाइटर है, वो आके लड़ना चाह रही हैं, उनके सामने फाइटर जो भी होगा उनका ही मसला नहीं. She's gonna want to fight, right? She's gonna want to perform. अब लोग लिटरली कमेंट्स में आके कहते हैं कि why is she fighting this little girl? Why is she fighting an underage girl? She hasn't chosen anything. Like, she's just doing what she does. Similarly, Shahab Ali Reedi, Sajid Katoshi, these guys are, I would say, a notch above most of the talent in their weight class, especially क्योंकि lightweight और welterweight में quality talent अभी नहीं generate हुआ जितना हो सकता है. तो इस fighters की तरफ अब criticism ये आ रहा है कि यार तुम लोग pro क्यों नहीं turn करते, तुम लोग amateur क्यों रह रहे हो? And maybe the 5 lakh has something to do with, maybe it's a personal decision, but how do you feel about this? Do you feel like that incentive might be stopping some fighters to go pro when they should? I don't think that any fighter who
who opts to stay amateur, they no one understand this कि उनको पता है कि यार amateur में उनको sponsors नहीं मिलने वाले, पहली बात तो ये है। तो वो Yeah. सिर्फ उस 5 लाख की बात नहीं होती है, obviously that's like the first thing, वो first step है। किसी किसी उसमें ये फैक्टर प्ले कर सकता है किसी केसेस में, लेकिन अब ईमान की आपने बात की तो ईमान जो है ना एक बहुत ही स्पेशल केस है कि शी इज टॉल फॉर हर वेट डिवीजन एंड शी लुक्स बिग फॉर हर वेट डिवीजन, शी स्ट्रीम रोलिंग थ्रू एवरीवन इन पाकिस्तान। अब मसला ये है लाइक यू सेड, she hasn't chosen the girls that she needs to fight or she has to fight, and the girls in front of her, they're there to fight her too, ठीक है। सो ये सिर्फ ईमान Yeah. के वो नहीं बनती, ये उन लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि they should want to beat ईमान, they should train to want to beat ईमान, they should train as hard कि हर मतलब सुबह शाम उठते उठते सोते जागते बैठते उठते जो है ना उनको ये होना चाहिए कि यार ईमान को हराना है हमने, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब जब किसी को अपने से छोटे को बड़े को 0-1 5-0 0-4 0-3 को जब हराता है तो उसमें जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके सारे जो है ना लोग खुश होते हैं। लेकिन जब यही चीज़ अपने मुल्क में इस तरह हो रही है जहाँ पे टैलेंट पूल है ही नहीं, जहाँ पे अभी अभी ग्रो करना शुरू हुआ है, तो उस पे जो है ना लोगों को मसला होता है। ऑब्वियसली मसले होंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ नेसेयर्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, उसका कोई इशू नहीं है। सबसे बेहतर बात ये है कि ये बाकी लड़कियों के लिए भी एक इंसेंटिव है। अब दो इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द कॉइन। एक साइड पे अगर आपको खाली ईमान खान नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे आप ये देखो कि बाकी जितनी लड़कियाँ हैं उनके लिए इंसेंटिव है कि यार ईमान को हराना है। तो कितनी सारी लड़कियाँ ईमान को हराने की कोशिश करेंगी। सो दैट इज़ व्हाट Yeah. वी नीड कि और लड़कियाँ आएँ। हो सकता है कोई अनीता जैसी कोई हो, किसी गाँव में जो है ना क्या नाम है सामान जो है ना उठा रही हो, आगे पीछे कर रही हो और एंड में वो कहे यार मैं हरा सकती हूँ इसको अगर मैं जो है ना कुछ टाइम ट्रेनिंग करूँ, और वो आके हरा दें। So nobody Yeah. comes and beats Iman and then turns into an overnight star and maybe we have a new star in the country. तो कुछ भी हो सकता है। Yeah. So इसमें हम ईमान को या शहाब को ब्लेम नहीं कर सकते। अभी शहाब ने खुद बोला कि, और ये यहाँ पे फाइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, शहाब ने भी खुद बोला कि यार अब मैं जाके जो है ना कुछ टाइम बाद आई एम गोइंग टू टर्न प्रो, तो नेक्स्ट एनएफटी में जो है ना मैं नहीं होऊंगा, तो उसने अनाउंस कर दिया। तो ये कोचेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने एथलीट्स को ग्रूम करें, उनको समझाएं कि यार ये आपकी इतनी एमेच्योर जर्नी है, अब इसके बाद जो है ना आपका प्रो करियर शुरू होना चाहिए, बिकॉज यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, नाउ इट्स टाइम टू मेक बिग मनी, मोर मनी। एमेच्योर में आपको सिर्फ पाकिस्तान में 5 लाख मिला, उसके बाहर नहीं मिलेगा। और अगर आपकी Yeah. सोच वहीं तक लिमिटेड है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ टाइम कि 3-4 साल बाद जो है ना आपको एमेच्योर फाइट्स ही नहीं मिलना बंद हो जाएंगी। Yeah. और काफी ज्यादा इस तरह के फाइटर्स के साथ, and I think there is a natural system in Yeah. play. And again, like we talked about before, जैसे ईमान का अगर हम केस देखें, and I want to kind of talk about the state female MMA in Pakistan, क्योंकि it's a double-sided thing, and I think Omar, if I can confirm this with you, Minhal Heather sent this question about our honest thoughts on the state of female MMA athletes in Pakistan. Just to get into that, is Yeah. that correct? Did I get the name right? The correct question from Manal Heather is that this was the biggest showing of female MMA in Pakistan history. Honest opinions on the state of talent of female MMA in Pakistan. Okay. So, That's a Uloomi very good is, question. yeah, very good question. क्योंकि it's a double-edged sword in this one specifically. क्यों? क्योंकि एक एंड में obviously हम देख रहे हैं कि हर साल talent pool बड़ा होता है, which is a very very, कि हर साल हम देख रहे हैं कि हर weight class में और fighters अब बढ़ती. Wow, Uloomi, that is a nice light. It's just crazy. Let's go, man. Let's go. I needed Yeah. to keep things light for a bit, you know. Hey, I love it. I love it. So, if we come back to the specifically, अगर हम काफी ज्यादा फीमेल फाइटर्स को देखें, इसमें मेरे ख्याल से क्योंकि जिस तरह एनएफटी स्ट्रक्चर्ड है, रीजनल ट्रायल्स होते हैं, ये जानना भी जरूरी है कि हर प्रोविंस में ट्रायल्स होंगे, वहां से फाइटर्स निकलेंगे, वो अपने ट्रायल्स जीतेंगे, फिर वो आगे एनएफटी में जाके compete करेंगे. अब मेरे ख्याल से एक जो मेजर चीज इस साल हुई है वो ये है कि जो ब्रैकेट है आपका एनएफटी फाइनल्स का ब्रैकेट, वो आ गया. अब कुछ वेट क्लासेस में मे बी दैट मेक सेंस, जैसे स्ट्रॉ वेट है, फ्लाई वेट है, बैंटम वेट है. इस हद तक मैं बैंटम वेट से भी नहीं आगे जाऊंगा.
इस हद तक शायद इट मेक सेंस क्योंकि हमारे पास लोअर वेट क्लासेस में ज्यादा फाइटर होते हैं। लेकिन अगर आप यही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे मेल लाइट वेट पे, मेल लाइट हैवी वेट पे, और फिर यही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे फीमेल बैंटम वेट पे, फीमेल फेदर वेट पे, तो व्हाट यू एंड इवन ऑनेस्टली फीमेल फ्लाईवेट लाइक काफी ज्यादा ऐसी फाइटर्स compete कर रही थी इस साल एनएफटी के फाइनल्स, मतलब प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमी और फाइनल में, जो मेरे ख्याल से अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू देम बट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट लेवल ऑफ कंपटीशन। वो अभी नहीं है तैयार उस प्लेटफॉर्म के लिए, इस तरह की फाइटर से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के दूसरी चीज जो स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है वो ये है कि हर प्रोविंस में, जैसे बलोचिस्तान में फॉर एग्जांपल ट्रायल्स होंगे, तो प्रेसिडेंट और उनके वो हर कोई जो भी उनकी गवर्निंग बॉडी बनी हुई है वो ओवरसी करेंगे, राइट? वो ओवर से फाइटर निकलेंगे। अब देखें, मेरे ख्याल से हर प्रोविंस को ऑब्वियसली एक चैलेंज, एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑब्वियसली, लाइक और ये साल और हर साल ये अपहोल्ड हो रहा है। बट व्हाट आई एम सीइंग इज अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर कमिंग नॉट रेडी फॉर दैट लेवल ऑफ कंपटीशन। फिर आप ब्रैकेट को 16 तक खोल देंगे तो फिर अ लॉट ऑफ पीपल कैन बी ब्रॉट इन जीती, they're going to be fighting in those, so काफी ज्यादा फाइट्स थी जो हम क्वार्टर फाइनल में देख रहे थे, तो फाइनल होनी चाहिए थी, बट वो लक से ही होता है। बट उसके अलावा भी आई जस्ट फील लाइक द स्टेट ऑफ फीमेल एमएमए इन पाकिस्तान इज कि हाँ, हर साल फाइटर्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। आई मीन वी कांट स्ट्रेस दिस इनफ, फीमेल फाइट getting avenues to come in and compete, but are all of them ready? I would say the large majority. How do we fix this? That's the debate I want to kind of have here. So it's a very beautiful way to that you put it there. I was actually trying to find the right words when you gave me words. It's exactly how it is. कि अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या होगा, right? The biggest thing is कि जब मैं यहाँ पे देखता हूँ लड़कियाँ आती हैं, तो यहाँ पे इनकी जो ट्रेनिंग होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक एक्सेप्शन यहाँ के एक यूनिकॉर्न की बात करते हैं, स्टैम्फेटेक्स की बात करते हैं। वो 4 साल की थी, उसने ट्रेनिंग शुरू की, अभी 24 25 26 साल की उम्र में वो 3 स्पोर्ट वर्ल्ड चैम्पियन बनी है। तो नाउ वी नीड टू लुक लाइक कीप दिस इन अकाउंट कि यार उसने ट्रेनिंग 23 साल की ट्रेनिंग के बाद, 24 साल की ट्रेनिंग के बाद वो बंदी अब जाके अगर एमएमए की वर्ल्ड चैम्पियन बनी है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे वहाँ पे किसी ने आज तक अनीता के या बुशरा के अलावा, आप मुझे बता दें, आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग ईमान हैज बीन ट्रेनिंग फॉर, लेकिन हैज देयर बीन एनी गर्ल हु हैज बीन ट्रेनिंग फॉर ओवर 5 इयर्स? 2018 तक, या चलो 2016 में कहाँ थी सारी लड़कियां इन सब में? 2016 में मतलब जो भी ये देख रहा है वो ये देखें कि जो लड़की लड़ रही है वो अपने से ये सवाल पूछे, व्हाट वर दे डूइंग इन 2016? ठीक है, तो this is going to make a lot of this going to open their eyes about themselves actually कि यार हमें 8 साल नहीं हुए एक compete करते हुए, या हमें जो है ना वो करते हुए। 8 साल पहले पाकिस्तान में एमएमए में खातून थी ही कौन? I remember 2016 we were still looking for the first female MMA athlete in Pakistan. हम टीम फाइट फोर्ट्रेस में जो हम ये देख रहे थे कि मल्टीपल जो है ना खवातीन आई, हम जो है ना पाकिस्तान की फर्स्ट एमएमए एथलीट बनेंगी, फीमेल एमएमए एथलीट बनेंगी, और कोई वो नहीं हो सका। तो सो बेसिकली ऑल वी हैव टू डू इज कि जो भी चीज़ें क्या नाम है फॉरवर्ड हमारे मतलब whatever is going to take our scene forward, whatever is going to take the girls grow, that's going to be a great deal. Obviously सबसे पहले numbers जो है ना सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले लड़कियों की तादाद बढ़ेगी, उसके बाद क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। So once again, this resorts on the athletes and the coaches as well, that the coaches have to make sure that they step their game up, they push the girls to such a level where they know what they have to do to in order for them to civic like to wrap it up, सिर्फ एक बात बोलूंगा कि if they want to take an example, Anita से start करें, not because she's my sister, but right now she's training in Pattaya, मैं बैंकॉक में बैठा हुआ हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं है कि वो ट्रेनिंग कर रही है नहीं कर रही है। मुझे पता है कि स्टैम्प की जो सबसे मेन और सब अकेली वाहिद जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पार्टनर है वो मेरी बहन अनीता है। तो उसको जब वो शुरू उसने किया था, उस टाइम पे इतने मुक्के लड़कों ने उसको मारे हैं, लाइक शी स्पार्ड विद द गाइज, कि मुंह पे इतने मुक्के खा के उसका जबड़ा बेचारी का हिल गया। वो सब करने के बाद अब जाके वो इस स्टेज पे पहुंचे कि वो स्टैम्प की जो है ना सबसे मेन क्या वो ही वाहिद उसकी ट्रेनिंग पार्टनर है। तो
So we have to set the standards high. हर कोच को अपने एथलीट के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे वो उस अच्छी क्वालिटी के एथलीट्स निकलेंगी. क्वांटिटी अभी बढ़ रही है जो बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी अभी बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा. फॉर श्योर. और इसमें आई थिंक ये वाली बात भी आ जाती है कि यार ऑब्वियसली जब हम और से और लड़कियों को चांस देंगे टू कम्पीट, ये मेल वेट क्लासेस में भी अप्लाई होते हैं, जितने आप दरवाजे Mm. खोलेंगे उतने ज़्यादा फाइटर्स आएंगे, वो उतना बेहतर लड़ेंगे, उतना उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतने वो रियलाइज़ करेंगे कि यार मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकता या कर सकती. Yeah. तो अगेन वेरी फेयर पॉइंट. इस साल लेकिन अगेन कुछ वेट क्लासेस में लाइक यू फॉर एग्जांपल इफ यू वॉच एनी ऑफ द फाइट्स फ्रॉम फीमेल featherweight, lightweight, welterweight. Uh, Featherweight was still okay, but lightweight, welterweight, female, I don't think we're ready for those weight divisions yet. Mainly because unme thi bhi kuch 3 se 4 fighters per weight class, and you're spending 5 lakh on the winner. Again, congratulations to the winner. I'm not saying unko paise nahi milne chahiye, but as a federation, do you really want to open up a Yeah. weight class? Isme clearly you don't have any fighters to begin with. Do you really want to be spending close to like 10 lakhs on that? That's the question you have to ask yourself. That's a big amount of money, and you can spend that elsewhere as well if you're opening it up to like female lightweight, female welterweight ki winners. It's a very interesting thing to discuss ki, like, do we even need those weight classes right now? Well, even if we don't need them at this point, the what it's doing is it's bringing incentive, it's bringing more girls to the game. ठीक है. Yeah. लड़कियां जो चाहती हैं कि यार हम फाइटर बने, एथलीट बने, दिस इज द टाइम फॉर देम टू स्टेप इन. अब फिर वही बात आती है, 5 लाख कम. If they want to invest that kind of money, if they've decided to invest that kind of money, that means if they have that kind of money, then let them invest it, let them grow the talent. हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार वो पैसे कहीं और जगह लगा दो. ठीक है, Yeah. उनको पता है पैसे कहाँ लगाने. दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे हैव द मनी. उन्होंने Yeah. पैसे जो जिसके हाथ में पैसे होते हैं ना, उसको पता होता है कि पैसे कमाते कैसे हैं, पैसे रीजनरेट किस तरह करते हैं. इसी वजह से उनके पास Mm. बहुत ज़्यादा पैसे आते जाते हैं. तो जब ये सब हो Yeah. रहा है तो फिर करने दो उनको जो कर रहे हैं, पहली बात. दूसरी बात, Yeah. खवातीन एथलीट्स के लिए आहिस्ता आहिस्ता इसको ये करना पड़ेगा कि चलो वेल्टर वेट में या जो खवातीन को बोले यार नेक्स्ट में आप लाइट वेट में लड़ें. क्यों नहीं, हम लोग ये क्योंकि 2-3 लड़कियां हैं, वेट ब्रैकेट बंद करें, आप नीचे वाले वेट में आ जाएं, यू विल बी लाइटर, यू विल बी Yeah. बेटर, स्ट्रॉन्गर. दैट गिव्स इंसेंटिव फॉर द गर्ल्स टू गेट इन अ लाइटर वेट डिवीजन. और दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली जो वेट डिवीजन है वो 52 किलोज, 57 किलोज और मैक्सिमम 61 किलो जो बैंटम वेट है. बैंटम वेट में भी बहुत लड़कियां नहीं मिलती हैं, बहुत कम है. मोस्टली जो है ना स्ट्रॉ वेट और फ्लाई वेट में लड़कियां होती हैं. तो दिस विल बी एन इंसेंटिव फॉर द गर्ल्स टू गेट लोअर ऑन द वेट क्लास, मेंटेन देयर वेट क्लास, दे विल Yeah. बी स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर. और हो सकता है वहां से जो है ना उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज निकल पड़े. And I think इस साल जो NFT में हुआ, even with the female weight classes, perfect हो गया, बहुत अच्छा था, very happy with it, and I'm glad they took that step to open up even more weight classes. But again, Yeah. there are lessons to be learned here, lessons to be learned for the PMMAF. Like you said, maybe we bring the welterweights down to lightweight, or at least ask them to see if they can make that weight. That would make the weight class more interesting. And more than that, a big lesson for a lot of the federations. यार अगर आप एक और आप अपनी फाइटर्स भेज रहे हो इस टूर्नामेंट पे, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बेसिक बेसिक फिटनेस लेवल उनका चेक करो, बेसिक स्किल लेवल चेक करो, बेसिक knowledge of being able to not just attack but also defend themselves. Because again, मैं यहाँ बैठ के किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, but some of those fights were not, it was very hard to watch them, it was very hard to commentate them, it was Yeah. a struggle for us to sit there and like try and seriously commentate a fight जिसमें fighters 10 फुट दूर एक दूसरे से खड़ी हैं, they're not throwing a single punch for 3 minutes at a time, That was nothing is fun. happening, the referees, yeah, multiple times telling them to engage. Again, ये fighters की गलती नहीं है, fighter खेलना आता है, fighter खेलना आता है, fighter athlete है. This is on the provincial bodies कि वो make sure करें कि यार हमारे province को represent करने जा रहा है, तो we need to make sure they have that minimum level of physical. और मतलब मैं यहाँ बैठ के मान नहीं सकता Uloomi कि we don't have tough, durable fighters from Balochistan, or that we don't have tough, durable fighters from KPK, or that we don't have tough, durable fighters from any province. We have tough, durable people in all martial arts across the board. Yeah. But some of the fighters, most of the fighters, I would say, in a lot of cases that I saw, they're just not ready for, forget MMA, any kind of physical martial arts. Because how can you stand there in front of somebody for 2 minutes at a time and not throw a single punch? It's just bizarre to me.
Martial arts is physical, by the way. You said physical martial arts. I just want to correct you there. Chess. No, I'm kidding. Yeah, you're Chess, right. not You're right. checkers. नहीं, लेकिन you're absolutely right. लेकिन मसला फिर ये ना कि ये जितने फेडरेशन की सारी बात फिर कोच पे आती है और एथलीट अपने ऊपर आती है कि what does an athlete want? Does an athlete want कि यार मैं जाऊं बस lay and pray करूं, I'll hug their leg and just lay on top of them for 3 rounds. 9 minute की fight है. अगर आप चाहते हो, everybody wants to be Khabib, everyone wants to be Conor McGregor, everyone wants to be as rich as those people. That if you want to be as rich, then you have to be as fit, you have to be as sellable, Yeah. and you have to be as watchable, as likable. ठीक है. The fight that you were talking about, मैं जब भी featherweight की fight आई, उससे मैं ख्याल से I was waiting for my teammates fights and मुझे आहिस्ता से समझ आ गया कि जो है ना वेट क्लास के लिहाज से जो है ना एक हायरार्की चल रही है फाइट्स की, एक जो वो Hmm. है प्रोसीजर जो है ना फॉलो कर रहे हैं. तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ठीक है, देखते हैं ख़वातीन की फाइट से क्या बनती है, क्या बनता है. तो व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग दैट, मुझे बीच में ना आई मीन आई डोंट माइंड वाचिंग बोरिंग फाइट्स, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है कि बंदे को गुस्सा आ रहा है. आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट द स्क्रीन कि यार प्लीज लड़ लो, ठीक है, एक दूसरे Yeah. बेशक एक दूसरे के पास जाओ, क्लिंच कर लो, ठीक है, बेशक क्लिंच करो, डोंट डू एनीथिंग, बट एट लीस्ट गेट क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, अब ये एक एथलीट Yeah. की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक कॉम्बैट स्पोर्ट लड़ने जा रहे हो, उसमें compete करने जा रहे हो और उसमें आप 6 फुट दूसरे 10 फुट दूसरे से दूर रह रहे हो एंड नॉट शोइंग एनी एक्शन, पीपल आर गोना नॉट वॉच दैट स्टफ. ठीक है, दूसरी बात जो आपने की, टफनेस बहुत ज़्यादा है, फिजिकल टफनेस बहुत ही ज़्यादा है. ये मेंटल टफनेस की बात आती है कि Hmm. इफ़ दे एक्सेप्ट दे आर टफ और नॉट, पहला. और दूसरा ये है कि हमने देखा बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन किस्म की फ़ाइटें की हैं. तो अगर वो छोटी बच्चियां बड़ी एज की लड़कियों के साथ फ़ाइट करके जीत सकती हैं, तो फिर टफनेस का फिर जो है ना अंदाज़ा लगा लो. Yeah. And I think just to segue off of that, Mujahid Beg, mentioned in the live stream comments that Mm. Laiba beat Natalia Khan in the quarterfinals, NFT3. She Oh, just turned 16. Just turned 16. I bet you on this 2 years more. Laiba beats Iman Khan. Maybe they won't meet in amateurs, but in pro for sure. In the meanwhile, Shagufta is by far the best option to beat Iman, make this fight. I think this is not the right live stream to be talking about matchmaking, fantasy matchmaking to see who can beat Iman Khan. But yeah, I mean, there's an example there, right? Ke Laiba Khan, Laiba Mir, pardon me, just 16 mm. beats. Actually had a very, very, very good run throughout the tournament. Only lost the final. She was Really? the defending champion. So yeah, you're right. Wow. Younger fighters is not always equal to a problematic in a problematic sense. अलूमी एक चीज जो एक्चुअली इसी सेगवे होती है, एंड दैट वाज एक्चुअली फ्रॉम द नतालिया खान लाइबा मीर फाइट, जो काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. लाइबा मीर एंड नतालिया खान फेस्ड ऑफ इन आई बिलीव द क्वार्टर फाइनल्स और द सेमीफाइनल्स, आई फॉरगेट. और उसमें क्या हुआ था कि उस वक्त डिसीजन नहीं बनाई गई थी, राइट? Like right after the fight, they weren't able to announce the winner. So they said this decision is now under review. So then both fighters were asked to leave the cage. Then the video of the fight was taken to different people and they were asked to, I don't know what the review process is, the review process. But उस वक्त decision नहीं दी गई. फिर दो और fights में throughout the tournament ऐसा हुआ कि fight खत्म हो गई है. मतीउल्लाह की fight थी, I forget with who. और एक और fight थी. Decision हो गई है. Sorry, fight खत्म होगी, decision नहीं आई. उन लोगों ने कहा आप केज से बाहर जाएं, हम लोग इसको रिव्यू में डालेंगे और फिर आपको बताएंगे whether that's really sketch. Isn't it? Like that is Man, not something that should be happening. this is what I mean when I say I hate the federation system. क्योंकि federations के लिए मसला यही होता है कि federations इस तरह की चीज़ें करते हैं, especially हमारा पाकिस्तान के जो federations हैं, वो they will come up with their own rules, they will come up with some weird ass rules, और फिर वो कहेंगे नहीं भाई हमें पता है 1991 में फलानी जगह पे ऐसा हुआ था तो हम अभी ये कर रहे हैं. भाई आप 1991 की बात कर रहे हो, मेरे पैदाइश की बात कर रहे हो, अभी 32 साल 33 साल गुजर गए उस बात को. ठीक है, 2023 2024 में क्या चल रहा है वो देखो. रिव्यू, एक फाइट का रिव्यू कभी नहीं होता. यू कैन नेवर रिव्यू. Yeah. अगर जजेस को बहुत ज्यादा मसला है, बहुत मसला है, चलो आप एक्स्ट्रा राउंड दे दो. ठीक है, मोस्ट ऑफ Yeah. द कॉम्बैट स्पोर्ट्स दे डू दिस, दे गिव एन एक्स्ट्रा राउंड. 3 Yeah. राउंड्स में कुछ नहीं हुआ, चलो 4th राउंड, समझ नहीं आ रही क्या दे दो, डोमिनेट राउंड. ठीक है, उसमें डिटरमिन कर लो.
and just look for whoever's going for more finishes, whoever is trying to Yeah. finish the fight. ठीक है, इसी सिचुएशन के लिए जजिंग क्राइटेरिया ये होता है कि you base the fight on aggression, you base the fight on someone wanting to finish the fight, and that's as simple as that. And for someone saying that आप केज से बाहर जाएं, हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बनती हैं कि यार फेडरेशन ने हमारे साथ 2 नंबरी की, वो हम जीते हुए थे तो फिर जो है ना उन्होंने बाद में हमारा रिजल्ट बदल के पता नहीं ये कर दिया, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं. So these are the kind of things that create problems in like because of the federations. This is the only reason why I am against federations. Other than this, सब कुछ ठीक होता है. But I mean, that's sad to see. That's really sad to see. Yeah, before I have a Umar, quick before question. you Oh, sorry, sorry. Umar, before you Yeah. jump in, I just want to make a concluding statement on that. इसमें बहुत ही खिचड़ी पकी हुई है. Like, I was really furious about this on the day कि यार, why are we going into a review? ऐसे नहीं होना चाहिए. इस कौन से MMA event में आप एक decision review करके बाद में, and then they would bring the fighters in the cage later and then raise their hand. The Athletic Commission, right, the Pakistan Mixed Martial Arts Athletic Commission with President Waqar Haider, they're supposed to be responsible for, you know, making sure that the officiating is done in one way or the other, all of that. But then they're pointing fingers towards the federation saying, जी अगर हमारे बंदे बैठे होते सिर्फ तो ये मसला ना होता, but उनके भी कोई बंदे बैठे. Federation is saying no, it's the athletic commission's mandate, blah blah blah. All, like it's all just a finger pointing problem. अभी किसी कोई solution उसकी नहीं निकली. And I think देखो, again, NFT was great. I will say this after every time I criticize them, because it seems every time I get in front of this camera and I say anything इस तरह की कंस्ट्रक्टिवली इसको बेहतर किया जाए तो लोगों को समझता लगता है कि बस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उनकी बुराइयां करने के लिए. बहुत अच्छा इवेंट था, बट आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड एनी मोर रिव्यूज ऑफ डिसीजंस मूविंग फॉरवर्ड इन एनी काइंड ऑफ टूर्नामेंट. एनएफटी, सुपर फाइट्स, एयरबाई वॉरियर्स, लेगेसी फाइट सीरीज, कोई भी इवेंट हो, आईएफटी, आप नहीं ये कर सकते कि फाइट खत्म हुई, फाइटर्स को केज से बाहर निकालो, बाद में रिव्यू करके. दैट्स जस्ट नॉट, लाइक, दैट्स शेडी, दैट्स वियर्ड. And just to wrap it up, दुनिया भर में गलत डिसीजंस होते हैं, नाइंसाफी हो जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू बन जाता है. ठीक है, देयर इज रॉन्ग Yeah. डिसीजंस, पीपल आर रॉब्ड ब्रॉड डे लाइट में. ना रॉबरी होती है कि एक बंदे ने दूसरे की पिटाई लगाई, कोट लगाई और अगले को विन दे दिया. ठीक है, बट उससे वी नीड टू डू दैट. गलत डिसीजन दो, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट मेक अ डिसीजन ताकि उसमें हमारे जजेस की एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग में बेहतरी आए कि यार जो डिसीजन है अभी देना है, बाद में आएंगे फिर बहुत प्रॉब्लम्स बनेंगे. तो Yeah. मैं इस टॉपिक के अलावा एक हमारे पास अच्छा सा क्वेश्चन है व्यूअर से. ये भी शाज़ बिजाज से आया है. वो कहते हैं, could you please provide clarity on the established criteria for selecting members of the athletic commission in regards to this? We That's a can't. very good question. That's the thing. We can't give Because we don't know the answer to that. vacation of that. Yeah, dude. Honestly, I don't like. There's some really good people in the athletic commission. I love the work they do, and they're doing a great job. Nasir Khan, of course, like, to me, is just one of those guys who's just so professional and is a good referee. He's a good judge. He understands the fight game. And he does a great job. Sama Mehboob is another very good ref, good judge. Zaman Khan is, like you said before, Uloomi, he's an excellent referee. But structurally, Man, I was मुझे कुछ नहीं surprised. पता. Yeah. I was so surprised to see his referee. He was like on the case, and the way he was going back and forth, he was super active. I was so happy to see him ref the way he refed. Or that was such a beautiful thing to see. मतलब ये है कि the guy is a coach, ठीक है? The guy is, यही बात आती है कि एक ऐसा बंदा जो खुद को accountable रख रहा है, responsibility ले रहा है. We need more people like him. हैं बहुत ऐसे लोग Yeah. जो कि करना चाहते हैं. Train them, let them do the job. ठीक है, बजाय इसके कि मैं फलाने को रखूंगा वो अच्छा रेफरी है, वो करना ही नहीं चाह रहा, क्यों उसको रख रहे हो? This guy wants to do this job, or like we're all here because we love the sport. हमें किसी ने जबरदस्ती एमएमए फाइटर बनने को नहीं कहा था. तुम्हें किसी ने जबरदस्ती ये नहीं कहा था कि दानियाल तुमने फलाना पॉडकास्ट करना, तो फलाने का, you wanted to do it, that's why you're doing it, and that's why you're freaking amazing at your job. This is exactly what we need. Whoever wants to do this, bring them in, okay, give them a chance, bring them in, train them, and then use them like that. Yeah, but as far as the selection criteria of the athletic commission, please refer all questions to President Bukar Haider, because I don't know. I select people on, I don't know कौन किसको assign जब वो I guess private promotion के साथ काम करते हैं, तो they, for example, they worked with us on super fights, then I had the liberty to say, okay, I need this referee, I need this judge, I need him.
changes out, he switches out, blah blah blah, so on and so forth. But for the most part, this is an independent governing body. I don't know how it runs, to be completely honest, and there's not a lot of clarity on it either. Kafi bada issue. So Daniel, is this ये जो athletic commission है, is this like a separate body या ये martial arts का है या क्या है? Like what is this? This is the first time I've heard about them. Yeah, this, and yeah, I've told them, you guys need an Instagram page, you need something so people can go see it. But this is an independent body of officials, referees, judges, so on and so forth. Like you have your Nevada State Athletic Commission, you have your California State Athletic Commission. This is the Pakistan Mixed Martial Arts Athletic Commission, so to speak, and it's specific for mixed martial arts. So they have a team, referees, judges, all of that. They go event to event. They do a fine job for the most part. Kafi obviously masle shayad ho, but overlap bhi hai thoda sa with the PMMAF and them naturally, because I think the PMMF helped them, initially. I don't know, but for the most part, they consider themselves an independent body. So yeah, and I think yeah, I mean, props to them for taking the step, all of them collectively, for saying, we need an independent adjudication and refereeing committee. अच्छी बात उन्होंने किया है, but again, उसमें भी थोड़ी सी हमें clarity तो चाहिए होगी. Who is training them? कहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको हेल्प कौन कर रहा है, सिखा कौन रहा है? बिकॉज काफ़ी इस तरह के केसेस हुए हैं इस एनएफटी में भी कि दे वर लाइक क्वेश्चनेबल, और उसके अंदर जो है ना, like it raised a lot of eyebrows, especially my eyebrows. That's why I was like raising my eyebrows right now. Oh, the questions are coming. तो मतलब जिस तरह से अभी एक रेहान की एक बात आई थी कि he tapped but it was not a tap, it was a Brazilian tap or something. Even you guys on the commentary box were talking about it as well. So I was like who trains these guys and all of that? But even so, चलो वो तो ये कर सकते हैं कि let's suppose when I come to Pakistan, what I can say is, अच्छा, let's do a seminar, judging, refereeing seminar, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, करके हमको train कर सकते हैं, किसी न किसी तरह से कर सकते हैं. लेकिन let's talk about what happened there in NFT, क्योंकि बहुत से इस तरह के events थे जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, upsets थे. But let's start off with Rehan's Brazilian tab. What was that all about? Yeah, Umar? So we have the video here. I'll just play it here for people to know what we're talking about. Yeah. This is taken from the fighter's own page, Instagram page. They posted this, so you may play karne wala. Yeah, Zamani, very impressive, by the way. Look at that. Suplex. when he was doing this, I was shocked and surprised, but I was so happy that that Gulzamani chose to wrestle with a wrestler. There it is. What is that? So over there, was this a tap or not? Let it play. Sometimes I mean, I don't know. Let's play it one more time. Play it one more time. Yeah. And boom. Yeah. It looks like a tap, but then again, this happened with Stamp as well. Stamp thought that the time is over and the girl has not stopped. So she was telling the girl to leave her head. That's her only loss to Aliciana Rohiania, something her name was. When she caught her in a guillotine, and she thought Stamp thought the time is over, and she was telling the girl, and she was trying to like frame on her face. She was trying to find her face, and she was like this, and ultimately that looked like a tap. तो कभी-कभी ये भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि अंकल चिल सनन की तरह जो है ना, रेहान ने भी Brazilian tap किया हो. I don't know. What's your take on this? I initially, in the moment जब हम commentary कर रहे थे, तो I did think maybe that was a tap, but to my understanding, a tap needs to be very clear, needs to be really firm, needs to be really like needs to be like I want to get out of this, and it needs to be at least twice. One, I don't think that's a tap. I don't know, maybe it is. I'm not a BJJ guy, I can't tell you any better, but a lot of BJ guys do that. They just tap once. Yeah, but at the same time, it's like no worries. We go back to the last Ahmed Mustafa fight when he fought that behemoth of a man. I forget his name in one championship. Ahmed, right? But that was not a tap either, because the guy, yes, he did raise his hand. Yes, he did put it down, but I don't think that was the intention of tapping. In this case as well, I don't think Rehan's maybe Rehan had that instinct to try and tap. But my take on it is, if he was really in that kind of trouble, then he would have firmly tapped and wanted.
But yeah, that's a close one. That's a very close one, and you can't blame Nasir Khan for even if he stopped it. You can't blame him. Even if you didn't stop him, you can't blame him. Because I do see the hand coming down once, but I don't see like an affirmation. Ki, "Yaar, get me out of here." You know, like so for me, it was a bit tricky in the moment. Though I thought he did See, that. To be honest, when I was doing the commentary. अक्सर होता है, अक्सर इस तरह होता है कि you have the instinct, you want to tap, but you don't want to tap. Sometimes you just want to, and especially for the guy who has the submission locked on, when they are very, let's say, very sportsman-like. मेरे साथ ही होता है. If I'm, let's say, I'm rolling with if I'm rolling with Anita, I catch her in any submission. I just wait for her hand to do this, not even tap. Yeah. I'm looking at her. कि कोई ऐसा gesture मिले जहाँ पे ये ना हो कि I put her to sleep and I'd be like, oh shit, what happened, right? तो Yeah. उससे बेहतर ये है कि जो ना जैसे gesture आता है, I start relaxing the submission, the hold. तो अक्सर ये होता है, इसीलिए जो ना एथलीट्स को लगता है कि यार ये होना चाहिए था, वो नहीं, वो होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था, बसाना होना चाहिए था. So that's a pretty I think common jiu-jitsu kind of a thing to do. But then again, it's not. Again, it all depends on the ref. If the ref has seen it or not seen it, the just like Jorge Masvidal said, it's super necessary for me to keep punching the guy in the face until the ref pulls me off. If the ref doesn't pull you off, don't um, don't stop hitting him. Don't stop yanking on the submission, or don't stop choking him, and don't stop squeezing on the submission. But beautiful display of grappling by Gulzamani. He surprised me with his grappling. But at the same time, when the fight ended, that surprised me even more. What he did at the end of the round, he just smacked Rehan in the face. And I mean, Yeah. I don't know what bad, because I could hear you guys saying that there's bad blood between those guys. So I don't know what was happening. I don't know the backstory. And I heard that Yeah. that he's getting banned or something too. Yeah. Omar. Yeah, this is we just got the same question anonymously. What are the thoughts on Gul Mohammad Zani's, and what did he do after the fight? Was the punishment justified? Is the anonymous question they've been asked to keep Yeah. anonymous. I mean, I think in case you all haven't seen it, we'll just describe it to you very simply. Fight खत्म हुई है, रेहान बैठा था, रेहान extended a hand, उसने कहा था easy है, fight खत्म हो गई है. Good fight by Zamani, because again जब मैं वो fight देख रहा था, third round में भी जब मैं वो fight देख रहा था, मेरे अंदर का promoter एकदम से जाग गया था और मैं सोच रहा था को मैं full camp के साथ rematch देना चाहता हूँ super fights पे, because what a fight. That's the first guy I've seen take Rehan to task, not just on any other aspect, but his wrestling, right? I was like, this guy should get a shot at Rehan because that is freaking insane. But then Gul Mohammad Zamani ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और fight के बाद रेहान यूरीब को मुक्का करा दिया. मतलब there was no need for that. Absolutely कोई जगह नहीं है हमारे स्पोर्ट में ऐसी हरकतों के लिए. बिल्कुल भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है. It is only gonna make it. Yeah, there we go. Thanks, Omar. Boom. Yeah, just like that. But man, good. और पता नहीं What Good job. a fight, ladies and But gentlemen. great job by man. Nasir bhai. How he pushed him. मुझे लगा Yeah, he's gonna yeah. choke him out or something. I thought he's gonna double leg him, choke him out, or do something. Man, what a ref! Nasir is a gangster. Yeah. And I don't know why Ali went into as if could knock out हो रहा है, but I think हम लोग बस वैसे ही इतने on edge. But yeah, इसमें easy Omar, I think we got it. Yeah. So इसमें ये है कि यार if you look at like the act itself, first Uloomi, I want to ask you. I'll get into bad blood after this and recap all of the bad blood that took place in NFT, which was really fun. Fun for me, I guess, but not fun for a lot of people. Should a fighter be future compet? Yeah, come on. I need to. That shit is fucking hilarious. But should a fighter be banned? But also, Uloomi, I don't know. Is Uloomi's video gone or is it मुझे ऐसा लग रहा है? I'm No, not sure. I can. Can you hear me? Can you I see can me? hear Uloomi's you, still but I there, don't know. don't You're worry. not visible. नहीं आ रहा शायद. Yeah, Danny, he's still there. Don't worry. On the Oh, live stream, okay, we're there we both go. visible, so it's just on your My end. bad. Yeah. Hey, first time doing a live stream. That's how it happens. Uloomi bhai, is it justified to ban someone indefinitely? Would you do the same? Well, I would say for a sport like this in Pakistan specifically, what you can do is we can start off by
by penalizing them right then and there, right? If you want to ban them for a short period of time. So, I mean, um, I remember one championship ने जो है ना अल्वारेदी रमजानोव को बैन किया कि एक बंदा फाइट जीता है, जॉनथन हैगर्टी जो है ना किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता, फैब्रिसियो अंद्राज को उसने नॉकआउट किया, जीत गया, किक बॉक्सिंग की दूसरी चैंपियनशिप बेल्ट जीत ली, इतने में बाहर से जो है ना आ गया जी अल्वारेदी रमजानोव आके कहता है कि भाई तुम मुझसे डर रहे हो, तुम चिकन हो, तुम भाग रहे हो, ब्ला ब्ला, एंड ही गॉट सस्पेंडेड फॉर 6 months फॉर दैट. ठीक है, आई मीन उसके सामने ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आके जो है ना एक बंदे को सेलिब्रेट करा, उसका मोमेंट खराब कर दिया, वो अलग बात है. लेकिन दिस इफ द गाय इज गेटिंग फिजिकल, बट देन ही शोड इंस्टेंट साइंस ऑफ रिग्रेट एंड रिमोर्स. आई डोंट नो इफ दैट वाज एक्टिंग, वो सर पकड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. बट देन अगेन आई वुड से if you do on a ban, तो फिर जो है ना आपको ये करना पड़ेगा कि एक कमीशन के तौर पे ना you will have to come up with a set of rules कि भाई अगर आप ऐसी ये हरकतें करोगे तो आप बैन हो जाओगे. और सिर्फ एक बंदे को बैन करने से कुछ नहीं होगा. you'll have to start banning all those people who have been not complying to your rules. तो अगर Yeah. ऐसा हो रहा है तो फिर ठीक है, देन I'll say the ban is justified. और ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि फाइटर्स को चेक में रखा जा सके. फाइटर्स जो है ना एक Yes. like Mr. Wong, the owner of Fairtex, says that fighters are like Mustangs. They're like wild horses. You have to keep them in check. So this is very important. You have to keep the fighters in check, especially if you're the only amateur promotion, and if you're the only amateur promotion in the world who's paying that much of a money, almost like $1,500, almost $2,000 actually, to an amateur fighter. That's a big deal. So yes, they have all the right to ban him for that. Yeah, and I agree. I think बहुत ज़रूरी है. And again, I know Gul Mohammad Zamani immediately बहुत apologetic थे अपनी actions के लिए, but that doesn't change anything. अगर उसको माफी दे देते और कहते कोई बात नहीं, चलो आप लड़ लो, कोई मसला नहीं है, हाँ हाँ इट्स फाइन, तो देन किसी फाइटर को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डर ना होता कि यार मैं ये नहीं कर सकता, या Exactly. उसको बिल्कुल भी थोड़ा सा वो डेटर में थोड़ा सा भी उसके पास कोई वजह नहीं होती कि यार मैं भी ऐसी हरकत कर सकता हूँ, क्योंकि उनको भी लगेगा मैं भी मारूंगा, मैं भी माफी कर लूंगा, मैं भी आगे खेलता रहूंगा. आई थिंक ऑब्वियसली Sorry लाइफ बोल के टाइम आगे बढ़ बैन की जाऊंगा. जरूरत नहीं है. हाँ सॉरी बोल के आगे बढ़ जाऊंगा. आई थिंक लाइफ टाइम बैन की जरूरत नहीं है. दैट वुड बी रियली बैड फॉर समवन लाइक जमानी. आई थिंक ऑब्वियसली उसका करियर आगे बचा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कीपिंग हिम आउट ऑफ द लूप आई थिंक वुड बी गुड, कि ही कैन आल्सो गेट हिज हेड क्लियर. ये जरूरी है. बट ऑल्सो मैंने जस्ट टू काइंड ऑफ सेगवे फ्रॉम दिस, I spoke to Zamani's coach Zaman Khan as well, और वो bad blood पे actually वो एक दो मिनट बाद आते हैं, but just a kind of I asked him क्या सीन है, like why would he do something like that. अब उनकी जो justification थी, I didn't really like believe it, but again अगर उसको देखा जाए तो maybe this apparently fighter accommodation मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं सिर्फ कॉमेंट्री करके I would go back. लाहौर में ही होता है तो अल्लाह का शुक्र मैं वापस घर आ सकता हूँ, बट जो लोग बाहर आउट स्टेशन आए हैं वहां पे apparently there was just a big hall with a carpet and people were like सो जाओ, शायद दिए नहीं दिए, something along those lines. Weight cut करने के लिए को proper facility नहीं थी. In fact, a lot of fighters had to go to a kitchen and use like a methane gas stove the room so that they can then cut weight, जिसकी वजह से बहुत लोग बीमार भी हो गए थे, including Katoshi, who I saw said that he in a lot of people's stories. yeah कि वो methane gas, I mean come on, that's not safe. Or Saria Khan actually sent in a message. She said she wants it read out on the stream. I'll just get to that in a second. She got her jaw broken, had an entire nightmare scenario in this. I don't think कि इसकी कोई justification है कि जी हमारी कंडीशंस बहुत बुरी थी, 4 दिन हमारा दिमाग खराब हो गया तो तुमने उसको मुक्का मार दिया फाइट के बाद. आई थिंक हर कोई उन कंडीशन से गुजरा था, किसी और ने. But at the same time, to kind of segue out of that issue and get into this, जय हम पहले बात 2 और वेट डिविजन्स खोली फीमेल एथलीट्स के लिए, जिसमें टोटल 4 कंपेटिटर्स और 5-5 लाख रुपए. I would just say कि देखें again, NFT great job, PMMAF great job. मुझे हर दफा ये बोलना पड़ता है कि मैं किसी को ऑफेंड ना कर दूं, और मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को कहूं कि वो बुरा कर रहे हैं या वो अच्छा कर रहे हैं या वो ये. हमारा मकसद है कि हम बातें करें कि आगे भी और बेहतर चीजें हो, कि फाइटर्स को भी थोड़ी अवेयरनेस हो कि यार हम लोग, हमें मांगने का हक होना चाहिए, कि हम उन्हें कह सकें कि भाई हमें बिस्तर चाहिए, हमें खाना चाहिए, वेट कट करने की जगह चाहिए. अगर नहीं है तो मैं पहले बताया, हम अपना इंतजाम करके आए.
but I feel like resources need to be deployed. I would much rather have a 400 athletes that is properly organized and everyone is given due accommodation. देखो जैसे IMF पे तो जो सीधी बात है फाइटर्स खुद पे करते हैं, एक वो रजिस्ट्रेशन फी देते हैं जिसमें उनका होटल, उनका खाना, उनका वो टिकट अपनी खुद कराते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं, वो बस जाके compete करते हैं, उनको किट शिट मिलती है, वो सब मिलता है और उनके लिए मैनेजमेंट अच्छी होती है. बट ऐसे गार्डन्स तो गोइंग वेल एंड बियॉन्ड कि नहीं हम, क्योंकि ऑब्वियसली फाइटर्स aren't that well off, वो कहाँ आके काला शाह काकू में रहेंगे, किस तरह वो अफोर्ड करेंगे, कोई होटल नहीं, तो वो खुद अपनी जेब से पैसे लगाते हैं. यस दैट्स वेरी गुड, बट आई वुड मच रादर कि 400 फाइटर्स का अच्छा टूर्नामेंट कराएं जिसके अंदर अगर सबको आपने देनी है अकोमोडेशन तो डिसेंट अकोमोडेशन दें, जो उनको चीजें चाहिए वो उनको सही तरह की, एज अपोज टू हम लोग उसको 1000 तक स्ट्रेच करें और फिर उसको मैनेज करना एक नाइटमेयर बन जाए. बहुत ज्यादा फाइटर्स ने रीच आउट किए saying यार वी वर नॉट एबल टू परफॉर्म आवर बेस्ट. एथलीट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हमें रहने की जगह नहीं, खाने की जगह, खाने की ये वो ये नहीं मिल रहा था. How would you take this in a positive way and kind of say कि यार इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? To be honest, positive way, I don't know if I can take this in a positive way. I'll just be honest about this. कि अगर आप, if you've taken the responsibility of giving athletes accommodation and food, then you have to live up to that, to your word. सीधी सी बात है. अगर आप कह रहे हो कि नहीं, we were giving them 5 लाख रुपए as the prize money, तो फिर उनको ये बात क्लियर कर दें कि भाई हम जीतने वाले को 5 लाख देंगे, बाकी आप सब ने अपना अपना करना है, क्योंकि यू आर कमिंग फॉर दिस प्राइज मनी, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड इन्वेस्ट इन द इवेंट, सो यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ द इवेंट, यू कैन गेन एक्सपीरियंस, या जो भी आप अगर 5 लाख जीतना चाहते हो, आप गोल्ड जीतो, आप जो है ना 5 लाख जीतो, ले जाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना पूरी हो गई. बट द प्रॉब्लम हियर अराइजेस कि फिर वही आप वाली बात आती है कि एथलीट्स गरीब हैं, ये है वो है. आई वुड से चार्ज देम सम नॉमिनल अमाउंट, ठीक है, बट साथ में फिर ताकि आपके ऊपर भी वो बर्डन ना हो कि यार हम उनका खाना देखें, इनका अकोमोडेशन देखें. मेक इट क्लियर टू देम. आई वुड जस्ट कीप इट वेरी सिंपल एंड क्लियर. आप कह रहे हो कि मेरा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से 25 टीमें आ रही हैं, तो 25 टीमों के लिए एटलीस्ट 25 सेपरेट रूम्स होने चाहिए हैं जो आपने कहीं ना कहीं अरेंज किए हों, ठीक है. अगर आप 25 हॉल्स भी कर लेते हो, एक टीम के अगर 15 लोग आते हैं, एक्सक्यूज मी, तो वो 15 लोग उस एक हॉल में रहें, जो मर्जी करना है वो उनकी जिम्मेदारी है. एथलीट्स के लिए खास तौर पे ये मैनेजर, दूसरा तीसरा यार दोस्त, कजन शजन, ये जो आते हैं इनको जो है ना अलग कर दो. जो एथलीट्स हैं वो वहीं पे रहेंगे. 3 से 4 एथलीट्स आते हैं पर टीम, तो आपके पास जितने भी एथलीट्स के लिए रहने की जगह अवेलेबल होगी, और आप उनके लिए जो है ना खाना प्रोवाइड करो. खाने के लिए इफ़ यू वांट टू चार्ज देम, डू चार्ज देम, ताकि उनके आप कम से कम उनको ये हो कि यार हम पैसे दे रहे हैं, हमें खाना मिल रहा है, कम से कम कॉन्शियस क्लियर हो. उसके साथ साथ द ओनली थिंग दैट हैपेंस इज के ऑब्वियसली दीस गाइस आर पुटिंग इन सो मच मनी कि आप इतने लोगों में जो है ना इवेंट इतना अच्छा करा रहे हो, आप इतने लोगों को बुला रहे हो, आपने वेन्यू इतना बेहतरीन करके तैयार किया हुआ है, आप इतने लोगों को 5-5 लाख रुपए जो है ना तकरीबन कोई 8 मिलियन टू 10 मिलियन जो है ना आप लोगों को प्राइज मनी आपने जो है ना अलॉट करके रखा हुआ है. इसके ऊपर then obviously if you don't want to take this burden as well, then charge the athletes. उनको आप कोई नॉमिनल सा कुछ ऐसा जो है ना अरेंजमेंट करके दे दो जो उनके पॉकेट पे भी भारी ना पड़े. और यार पाकिस्तान में हमारे पास खाने के इतने ढेर सारे वेंडर्स होते हैं जो कि रेडी एंड विलिंग टू वर्क फॉर चीप, ठीक है. आई थिंक IFT में भी ये इशू हुआ था कि ईरान वालों को खाना नहीं मिला, तो पाकिस्तानियों से उठा के ईरान वालों को दे दिया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज बनते कि नाश्ता नहीं किया है भाई, लंच का टाइम हो गया है, लंच का खाना जो है ना वो 5 बजे मिल रहा है शाम को. सो ऑल ऑफ दिस थिंग नीड्स टू बी, अगर आपका एथलीट इज नॉट हैप्पी, सिर्फ 5 लाख इज नॉट गोना डू एनीथिंग. if your athlete is not well taken care of, you'll have a bad quality of fights. So ये सारी चीजें जो है ना the SA Gardens needs to see के I'm not sure where the venue was, उनकी अपनी जगह है क्या नहीं है, at least उनके पास कम से कम उनको अगर पता है कि हर साल हमने करवाना है, they should have some sort of planning on this कि यार हमें ये जगह हमारे पास हो, इस जगह पे हम इतना एथलीट्स को बिठाएं, इस जगह पे इतना एथलीट्स को बिठाएं, और इनको हम यहाँ से इस जगह से खाना लेके आए, मतलब ठेका दे दें किसी को, बात खत्म. ठेके पे काम कराओ, काम आसान कर दो. पाकिस्तान में जुगाड़ लगाने का सबसे बेहतरीन जो है ना एरिया पाकिस्तान ही है बल्कि जुगाड़ लगाने का. सो यू कैन गेट इट सॉर्टेड. You cannot give everyone separate rooms. You cannot give every fighter separate room. You cannot give them a good, nutritious food.
कोई मसला नहीं है, उनको बोले कि यार अपने खाने का बहुत बंदोबस्त कर लें, ठीक है, आपको रहाइश के हम लोग इस तरह से जगह लेके आते हैं, अपना बोरिया बिस्तर खुद लेके आ जाओ। स्लीपिंग बैग हर कोई अपने लेके आ सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो स्लीपिंग बैग जो है ना करके आप उनके लिए नीचे मैट्रेस बिछाओ, स्लीपिंग बैग वो जो है ना अपना खुद कर देंगे। That is it, that is sorted, that's like the cheapest option. Yeah. Otherwise I would like to see के like you said पहले के weight classes थोड़े कम हो जाएं। weight classes कम होंगे तो उसका जो expenses होते हैं, उसके जो उनके एक्सपेंडिचर है वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। Yeah. And again, I would just re-emphasize कि like कि step लेने के लिए भी आपको बहुत मतलब जिगरा चाहिए होता है. And I saw the way Babar Raja Exactly. was in the 3-4 days. Like he was not well, like physically. He was sick. He was unwell because he had put so much. And hats off to him and hats off to the entire SA Gardens team. Kudos. But I would say कि यार again मेरी इस पे बहुत एक simple philosophy है. बेशक 400 फाइटर्स का आप एक इवेंट करा लें, 500 फाइटर्स का, राइट, जिस तरह लास्ट ईयर का एनएफटी था, 8 की जगह 16 का ब्रैकेट ना रखें, आप ना ब्रैकेट को ज्यादा बड़ा करें, आप इवेंट को बेशक उसी साइज का रखें जो पिछले साल का साइज था, और उसमें बेशक आप अगेन जो खाना अकोमोडेशन, देखो एमेचर इवेंट है, अगर आप आपको अकोमोडेशन दो और चीजें नहीं दे सकते तो आई डोंट थिंक पर्सनली, सारी बात होती है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की, सारी बात होती है कि आप स्टार्ट से उन्हें कहो कि यार हम ये आपको दे सकते हैं, हम इससे आगे आपको नहीं देंगे, एंड आई एम श्योर फाइटर्स एंड कोचेस विल स्टिल वांट टू compete बिकॉज to them. If you're going to commit कि आपको accommodation मिलेगी, आपको food मिलेगा, and you're not able to deliver, becomes a problem. And again, I feel like कि हर एक के लिए beneficial होगा अगर हम 16 fighters का bracket ना रखें, and that's just my personal opinion. I could be wrong. That's up to them if they want to do it. Sure, do it. But I feel like it's gonna be really, really difficult to maintain अगर आप 16 लोग एक bracket में रखें. I personally feel, Daniel, lastly ना इसको मैं ऐसे एड्रेस करूँगा कि I personally feel कि इतना कुछ वो कर रहे हैं कि उनको इस बात की क्रिटिसिज्म मिलती है कि यार आप हमें इतना मतलब कौन देता है एमेचर फाइट्स में। आई रिमेंबर हम लोग फाइट करना पैसे मिलते थे, ना हमें अकोमोडेशन मिलती थी, ना खाना, कुछ नहीं मिलता था। ये लोग अबव एंड बियॉन्ड जाके कर रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपको लड़ने के पैसे देंगे, हम आपके लिए अकोमोडेशन देंगे, हम आपको खाना देंगे, और उसके बदले में बाबर राजा कह रहे हैं कि मैं अपनी सेहत जो है ना दाव पे लगा के आप सबके लिए करूंगा, और लोग उल्टा कहते हैं यार उन्होंने ये काम ठीक नहीं किया। ठीक है, so ये हमेशा ऐसा होगा। तो बेहतर ये है कि ये जो चीज़ें हैं फाइट, न्यूट्रिशन और खाना पीना और रहाइश, वो बोलें कि यार ये जगह है, इधर पे करो, रह सकते हो, डिस्काउंट पे जो है ना हाफ प्राइस पे करके रह सकते हो, मसला नहीं है, वो कर लें। और ये चीज़ें बाकी जो उनकी अगेन जो बजट होता है वो बजट को किसी और चीज़ में इस्तेमाल करें। मतलब कोई फर्स्ट एड वाली चीज़ हो गई, कोई इंजरीज किसी को हो गई, किसी को फाइट में कट शट लग गए तो कोई डॉक्टर को लेके आओ, पे द डॉक्टर्स, उनको रख लो कि किसी को फर्स्ट एड या मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे जो है उसके ऊपर जो है ना इन्वेस्ट कर लेंगे। तो आई मीन मेडिकल की बात अगर आई गई है तो आई थिंक पाकिस्तानी एमएमए की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि one of our athletes has a jaw fractured, and again it's from my team. और this was Saria. I was not expecting कि especially amateur में ऐसा कुछ होगा, वो भी किसी लड़कियों की fight में. It was so shocking and surprising for me to see that. Yeah, there we have it on the screen too. Yeah, so we have the statement from Sari as well. Daniel, would you like to read that out? Yeah, Saria actually reached out based on, and again ये open platform था हर एक के लिए, हम on the Instagram पे stories लगा रहे थे, कह रहे थे जिसने जो भी भेजना है भेजे, we'll get your questions addressed. And Saria actually gave us a statement. She said it'd be really good if you guys can read this out. We said sure thing, go ahead. And again, this is करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसमें involve हो, आप भी अपना perspective आगे लाएं, तो हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, हमें किसी से ज्यादा प्यार नहीं है, हमें सिर्फ एमएनए से प्यार है, वी ऑलवेज वांट to. But anyway, Saria Khan, NFT2 runner-up, NFT3 quarter-finalist, wrote this to us, and I'm just going to read this out. And I quote, I really want you guys to talk about the fact that no contracts are being signed in NFT by fighters. When there's no contract, there's no insurance, you can't even question things. Fighter health should be a priority.
I was promised that I can get myself checked from the best hospital and surgeon for my surgery, and they'll pay off everything. And when I was getting hospitalized and told them about the bills, they were just giving me excuses. They did not pay even half of the major surgery I went through. A little payment was sent off after almost the last day hospital, that too by asking for it back and forth. It was so embarrassing and frustrating. Here in my situation, I was able to afford it, but I'm so fighter may have to go through the same major problem or minor injury and isn't able to pay it off. It's so shitty. I mean, there's literally no point in bringing in so many fighters when you can't take care of their in so much pain after my jaw fracture, and there wasn't even ice available. When went like 1.5 hour drive just to reach the hospital and the place they gave us to live. I don't know how we survived there. Normally I understand the struggle, so I get it, but that one night with that fracture being there, it was crazy. I don't understand bringing in so many fighters, investing in so much money for what? Lights and music. And it's a very good point by Saria. और इस case में again Uloomi, like you say, कि I think हम लोग normally expect करते हैं कि यार amateur event है, 50 or Baba Raja's fault. काफी ज़्यादा amateur events. I will again say कि even with these 3WL real world fight nights, वहाँ पे भी often there isn't an ambulance or a medic always available. Just like for example the random fight nights or inside the gym, just audience bhi nahi hoti. Like I don't think there's any kind of a medic or anything on stand. And by medic, I mean like proper paramedics, like people who are trained to deal with a situation like that. NFT ke case mein, there is always like athletic commission ke saath, there is Dr. Nadeem there, the 3G affiliate doctor. Of course, he's one of the oldest, most experienced doctors in Pakistan for MMA specifically. But at the same time, हम लोगों को रिस्क अवर्जन के लिए रेडी रहना चाहिए. जस्ट बिकॉज पहले दो एनएफटीज में कोई जॉ फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई आर्म ब्रेक नहीं हुआ, रास्ता लाइक हार्ट फेलियर की सिचुएशन या ऐसी कोई चीजें नहीं हुई जो कभी भी हो sport or any kind of sport, doesn't that mean that we shouldn't be ready for it? Have a proper procedure in place कि हम क्या करें. Like Saria's case, she fought a girl named Bushra Akhtar Khatana, who for my money is the number breakout amateur fighter from NFT3. She is easily the most impressive debut fighter I've seen in any NFT. Uloomi, this girl is next level. And I mean, like, her striking is most male fighters, and that is not a knock at any women. It's just the truth. Male MMA tends to be a lot. Male MMA tends to be better across the board, but Bushra Akhtar Khatana is just a spectacular athlete. She throws the right punches, she pivots out the right way. She's a boxing background, but she knows exactly how to circle out of those dangerous in the clinches against the cage. She has a very good fight IQ. She fought she fought Saria. Saria's jaw broke. Ab Saria, if she has to go 1.5 hour away to a hospital, there's no ice available. Again, I'm not saying this is NFT's fault or that I hate PMMF and how could they do this, but it's just a lesson that we need to learn, right? कि एक तो risk preparedness होनी चाहिए कि कुछ हो जाए तो लोग तैयार हों, और दूसरी चीज, and I want your thoughts on both these things, contracts, promises, expectations. इन चीजों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो इतने बड़े टूर्नामेंट में? You know what I'm saying? In a tournament that spans over 1,000 people, how can you possibly curtail or contain this kind of a situation? First of all, start with the contracts. क्योंकि ये बहुत जल्दी 3-4 लाइनों में बात खत्म हो जाएगी. So जब मैंने अपनी पहली प्रो फाइट लड़ी थी PFC 1 में, my rib broke. वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, लेकिन कुछ पे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. Obviously sport was growing. उसके बाद PFC 2 में when I got knocked out, एक डॉक्टर भाई आए, उन्होंने चेक किया, ये वो, ठीक है, I had a concussion but इतना कोई मेजर नहीं पता चला. We had the very basic first aid available there. ये पाकिस्तान के पहले और दूसरे उसकी बात कर रहा हूँ, शो की, प्रो फाइट्स की. अभी हम NFT 3 में हैं. Fast forward almost 12 years fast forward, right? So actually 13 years fast forward karo. So 13 years later, if you don't have a medic at an event, that is the biggest boo-boo I've ever seen in an event. Contract से अगर जब बात करते हैं ना, तो contract में ये होता है कि amateur में कहीं पे भी contract नहीं होता.
किसी एमेचर फाइट में कोई Yeah. कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, ये प्रो में That's मिलता it. है, क्योंकि प्रो में आप लोगों को पे करते हो, ये एमेचर में अगेन बाबर राजा हैज गिवन एक्सपेक्टेशंस टू द एथलीट्स, एंड ये इनका बड़कपन है कि ये एथलीट्स एमेचर एथलीट्स को इतनी हेफ्टी अमाउंट पे कर रहे हैं। अदरवाइज दुनिया भर में किसी भी एमेचर चैंपियन में ने आज तक एक फुटी कौड़ी तक नहीं कमाई है, ठीक है। नो प्रमोशन पेज एथलीट्स, इनका बड़कपन ये देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी साइन नहीं होते किसी भी एमेच्योर लीग में। आज तक मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट, वो सिर्फ वेवर ऑफ लाइबिलिटी होता है कि भाई अगर सीधा सीधा अगर आपको इंजरी हो गई तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये सिंपल एक वेवर ऑफ लाइबिलिटी होता है जो आपको साइन कराते हैं। Yes. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम सादिया बिकॉज देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन। एक एक्सपेक्टेशन है Yeah. कि 5 लाख मिल रहा है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, रहाइश दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो होता है कि यार इतना कुछ दे रहे हो तो फिर ये भी दे दो ना, वो एक डिमांड बन जाती Right. है, ठीक है। द ओनली थिंग लाइक आई सेड, आई इफ बाबर राजा इज वाचिंग मी राइट नाउ, आई वुड से सर पैसे हाफ कर दें, काट दें, 2.5 से 3 लाख रुपए करें ताकि $1,000 उनको दे दें, whatever the rate of dollar is at that time of the tournament, उनको वो जो है ना एक फिक्स वो कर दें, बाकी आपका आधा बजट बच जाएगा। 8 मिलियन लगाने का 4 मिलियन उसमें लगाते हैं, और बाकी 4 मिलियन आप जो है अपने 4 मिलियन से भी कम जो है ना आपका लगेगा आपके फाइटर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी में और उनकी जो है ना मेडिक्स के लिए। जस्ट डू दैट एंड द रेस्ट इज परफेक्ट, और कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। पर्स आधा करें, लोगों को 50% जो है ना पे करने का बोलें, अपने खाने और अपने उसका क्या नाम है अकोमोडेशन का, और साथ ही साथ जो है ना उनको अच्छा मेडिक्स जो है ना वहाँ पे लेके आए, हेल्थ केयर अच्छा मिले। दैट इज इट, नो एथलीट विल एवर से एनीथिंग बैड अबाउट देम, एंड well I think this that's pretty much it about it, क्योंकि Yeah. कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन वन मोर टाइम, आज तक किसी भी एमेच्योर लीग ने किसी भी एथलीट को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, कोई हेल्थ केयर नहीं दी है, तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन सेट की है बाबर भाई ने सबके लिए। So that's that. Yeah, and I think actually, I think Bauer commented on the Facebook live stream, and that's a very good point. They shouldn't have to Oh, nice. provide a sauna. Yeah, they shouldn't have to provide a sauna or anything like that because NFTs Yeah. on a walking have to be cutting weight to make weight. So Exactly. I understand that as well. Exactly. Yeah, and again, it's just if you see someone, I think look, it's just all about expectation management. If a fighter's coming, Yeah, usko pata hai ki yaar accommodation ki options ye hain, for that I can pay this nominal fee. तो मुझे शायद एक कमरा, शायद 2 कमरे मेरी टीम के लिए मिल जाएंगे जिसमें 10 लोग हैं, तो हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर यू गो टू द बजट अकोमोडेशन व्हिच इज दिस, तो उनको पहले से बता दिया जाए, पिक्चर्स भेज दें, ये जगह है, अपने स्लीपिंग बैग्स लाइक यू सेड ले आए, सो ऑन सो फोर्थ। Food is the same thing. If you want to, this is how much the food is going to cost. Otherwise, you can manage it yourself. I would say कि अगर expectations manage हो रही हो, and again अगर तो हमें accommodation भी नहीं दी, इंग ने तो हमें ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, तो फिर यार नहीं दिया, आप ना आए, आप like this is amateur MMA, it's the growth of the sport. हम लोग यहाँ बैठ के जितनी बात करें कि growth बेहतर बेहतर बेहतर, we can't just sit here all the time and keep shitting on the people who are actually trying to do something because उनसे 1000 लोगों में से 2 लोग या 3 लोग नहीं। This isn't about Saria's comments in specific. I actually do really sympathize with her and what she had to go through. I think उस केस में हाँ थोड़ी सी, regardless of expect एमेचर एमएमए फेडरेशन है, आप टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को बहुत जरूरी और देखना पड़ेगा। यू विल नीड टू नो क्या इफ अ फाइटर्स आर्म इज ब्रोकन, जॉ इज ब्रोकन, हार्ट इज फेलिंग, तो हम लोग कितनी जल्दी रिस्पांस टाइम में उसको निकाल के एम्बुलेंस से बिठा के सबसे करीबी हॉस्पिटल कौन सा है वहां कितनी देर में लेके जा सकते हैं। शी शुड, नोबडी शुड हैव, एंड अगेन उसको आप सीधा पहले से बताया था, आपने वेवर साइन किया, वी आर नॉट पेइंग फॉर योर ब्रोकन जॉ, सॉरी, बट इफ यू से दैट वी विल, एंड again masla banta, and again the truthfulness of her statement, I'm just leaving it to her, but very but again it's not all like it's PMMAF's fault either. Yeah, of course, and this is where I would like to once again address Babar Raja ke he needs to have a solid team with him, theek hai, not the kind of people whom he likes or who like him, because everybody likes him at this point, right? Seriously baat hai, I'll be super candid and say Babar Raja has got the money to fund NFT. He's paying everyone, so everyone's like, oh, I'm on your team, everyone's going to be in that team. Babar Raja needs credible people, theek hai,
क्रेडिबल पीपल चाहिए हैं, और क्रेडिबल जो लोग हैं वो उनको बेशक आप पे करें ना करें, नॉमिनल पे करें, व्हाटएवर इट इज, इफ यू हैव क्रेडिबल पीपल बाय योर साइड दे विल गिव यू गुड एंड दे विल स्टैंड अप फॉर यू। जब इस तरह की चीज़ें जो है वो होता है, क्या नाम है, इस तरह के जब पॉइंट्स आते हैं तो फिर दोस पीपल विल स्टैंड अप फॉर यू, बिकॉज it's not only your name on the line, but it's their name on the line and on stake too. So I think Babar Bhai just needs a solid team with him who are honest and who are brutally honest, जो कि सीधे सीधे मुंह पे बोलें कि यार आपने ये गलती की, ये गलती की, ये ठीक किया, ये गलत किया है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें, ग्रे में बात ना करें। क्योंकि पाकिस्तान में हमारा ये एक कल्चर है कि हाँ एक सेकंड में देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, एवरीथिंग इज लेफ्ट इन ग्रे एंड देन देयर इज नो पॉजिटिव रिस्पांस, जो कि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन बन जाती है। Yeah. And this is why I love doing these, because again हम लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे थे. We read out Saria's statement, so obviously we're going to read out Babu Raja's statement as well. He commented on the Facebook page. उन्होंने कहा Saria was given the option to get herself treated from Evercare Hospital. Please check their standard. She didn't stay there and left for Islamabad. Saria was paid 2,25,000 rupees for what Evercare was charging after her checkups. SA group at why she didn't treat herself there. Still, she was paid the amount Evercare was charging. We all find the hospital as best in Lahore, and we all get ourselves treated from there. Yes, for the Yeah, hospital, she didn't want to take that yeah, one. that's a So legit I point. understand. Yeah, I understand both. But But then again, I again, understand his now point this is on the 110%. athlete. Yeah. This is on the athlete. अभी ये Yeah. this is on the athlete, ठीक है, कि अगर आप उधर आप देखो, यही होता है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्क की फाइट है परसों, तो वो मारता है अपने ओपोनेंट को, जो है ना कुछ तोड़ देता है उसका, या कोई नॉकआउट कंकशन होता है, उसका ओपोनेंट कहता है नहीं मैंने फलाने हॉस्पिटल में इलाज नहीं करना है, मैंने बस्ताने हॉस्पिटल में इलाज कराना है, ठीक है। अगर जो हॉस्पिटल आपको आपके पहली बात, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, के एमेचर में तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल भी रहा है एट द एंड ऑफ द डे, और फिर भी आप जो है ना आपको मिल रहा है विच इज दे पेइंग फॉर इट, जैसे वो अगर बिल इफ दे टेक केयर ऑफ इट, तो then you should go and get yourself checked there. अगर आप you're not satisfied from there, then obviously they have a deal with those people कि यार आप हमारे एथलीट्स को ट्रीट करो, कोई ना कोई उनके स्पॉन्सरशिप उनके उसके पैनल पे होंगे ना, तो अगर आप वहाँ पे इलाज नहीं करवाना चाहते, तो फिर ये you have to do things by yourself, and if you're doing things by yourself, then you have to pay your bills by yourself, and it's still really nice of क्या नाम है, Yeah. ऐसे गार्डन to pay 225 to Sadia. Okay, she decided to get her treatment done somewhere else, or they still paid a good amount to her. And again, management की बात आ जाएगी. I don't know if NFT does any kind of paperwork, contracts, waivers. I don't know if they do. If they don't, then they really need to, because again, every event I've tried getting done, and I feel like every event जो have written down black and white, KR, I waive the liability of getting injured, so on and so forth. And also, उसमें लिखा हो कि I Yeah, waiver is understand important. that, yeah, I understand that the federation is offering me health hospital, and if I choose to decline, they are no longer, like whatever. So again, Yeah, things should be expectation clearly management. mentioned. Yeah, expectation management का ये नहीं है कि आप expectations बिल्कुल ना रखें फाइटर से कि यार you're on your own, आप आओ अपने इंतजाम. It just means कि उनको पहले से पता हो कि यार ये हो सकता है, ये वो दे रहे हैं, ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और उसके अलावा मेरा काम है यहाँ के फाइट करना, और अगर मैंने कुछ देखना है तो मैं खुद देखूं. That's it. It's again, listen, I hate it when we do one of these live streams and then somebody comes to me the next day and they're like, ये क्यों बात की? The point fingers at Saria Khan or at Babar Raja or at PMMAF or at Umar Ahmed or anyone. Like, we're such a small community, guys. Itne se, we're literally like, what? Mushkil se people, barely maybe 1,000 if you look at the NF. Like, it's a very small community, and it's just we need to improve the standards, and we need to have these conversations out loud. Ab I think is subject pe nobody's going to have any kind of ambiguity ki hona chahiye, nahi hona chahiye. And so transition on to the True. next question. Yeah. Yes, Proceed, Bashir. we have some questions from. Bringing back to the NFT tournament, I want us to talk about the best fights and the best runs that we had. We had a particular question from Instagram, Minal Haider, who said, "Who are the most interesting new prospects you had? What are the best runs that didn't capture the belt?"
for example. Man, I was so I have some notes here that I was actually going through these. Man, the best thing that like the two best things in my opinion was actually, well, no, not the guys who didn't win a championship, the guys who actually won championships. First and foremost, it was Queta's first ever champion when he came and said, "I'm Quetta ka Pathan." Man, that was amazing. I was so happy to see that guy be so happy, and finally we all know Ahmed Mustafa from Quetta, right? That's like the biggest Yeah. representation of Quetta. But then again, like how much is Quetta on Pakistan's MMA map right there? Like Quetta, जिस तरह के पेशावर है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, जिस तरह फलाना एरिया बस्ताना एरिया है, ठीक है, उस तरह Quetta is not on the map on them. It's like not projected like that. I Mm-hmm. believe this was the first time ever in the history of Pakistani mixed martial जब Quetta का ना ऐसा करके ठप करा के एक स्टिकर छप गया पाकिस्तानी Yeah. MMA के फोरहेड के ऊपर के Quetta is here, boys. Yeah, and I was really happy about that. That was the last final of NFT as well. Again, उस fight में बड़ी controversy आई थी कि जी जुल्करनैन को जीतना चाहिए था, हारना चाहिए था. I don't know. That's again, it wasn't like कि उतनी कोई one-sided fight थी कि robbery हुई. I think both fighters. I mean, again, it wasn't like a very happening fight. It's like Zulkarnain was landing leg kicks. The other guy was, I mean, yeah. The bad decision aside, yeah, I was just really happy. The questionable part, I was just really happy. There'll be one fighter that I want to talk about here. Breakout fighter of the year. I'm just such a big fan of hers, dude. I cannot explain. Uloomi, you gotta go watch her fights back. This girl has so much potential in this. Explain to you because look, ये बड़ी अजीब बात लगी कि बोलते हुए हम MMA की बात कर रहे हैं, but you and I both know बहुत सी स्टैंड अप फाइटर को, मतलब स्ट्राइकिंग बेस्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर को देखें कि वो एक कंप्लीट गेम प्लान लेके आए और उससे एग्जीक्यूट कर सके, मीनिंग दे एबल टू टच द अदर पर्सन विद things like jabs that you don't see a lot in MMA, things like check, also be able to not be taken down. She went through a murderer's row, and I'm talking about Bushra Akhtar Katana from Team Hungarian. She went through a murderer's row of competition, dude. She went through so many, like she went through Saria Khan, who was the last year's runner-up in the quarterfinal, broke her jaw, which, I mean, like in amateur, in 115 pounds MMA, like that's Man, think that's about some that, the serious power punching in the power hands, this girl man. That's some has. serious power in the hands. And then the semi-final, she defeats Anmol Fatma from Team Ultimate Martial Arts. Anmol is Bano Bhatt's main training partner. Bushra Akhtar in round number 3, in the last minute of round number 3, Anmol with a jab and drops her. She's a strawweight, dude. What is going on? This is in round 3, after 2 days of consecutively fighting, she drops this girl with another jab. And then the finals, she defeats Laiba Mir, who was the reigning defending champion. Completely out. Like, it was just brilliant to see. This girl is there's so much potential in her, and I'm so excited for what she can do. Like, that was my breakout fighter for NFT. Easy. Man, I mean, this shows, then we had a question earlier about female fighters and the this and that and quality. This is what, I mean, this is another example when I was saying that there will be another Anita Karim or ye to wo to, yeah, another Iman Khan. So this is what was needed. This is exactly what it is. Now she has raised the standards even higher. कि भाई अब आओ ना जरा तुम katana, like she's like her name, like a katana sword, right? I thought she was from Karachi, from K7 Academy or something, because उनका भी कोई katana के नाम से कोई boy है मेरे ख्याल से, मुझे लगा उसकी उनकी कोई कुछ लिखती होगी, but you said Team Hungarian, so that's, I mean, wow, I'm amazed. I'll definitely go watch her fights right now. लेकिन उसके अलावा जो दूसरा जो boy था जिसने हमारे, I think, featherweight के champion को, he put him to sleep in the finals with a guillotine. And then he said, and then he was like, man, I loved his post-fight interview where he said, Gujar ka program बढ़ गया. Man, What a this is star-making moment. Yeah. that was like that was most like more of a Nate Diaz moment for me right there with him. Yeah. It was such a beautiful thing Yeah. to see. But then again, man, that was, I mean, the
because I've seen Gujar's takedown, and I was like, okay, which guy is going to uh, try and submit Rashid Gujar, because they may have seen his IMMAF Asian Championship fight, and they would see, okay, this guy is not so good with submission defenses. So, and then he just fought like 2 weeks ago. So he's never he hasn't had a lot of time, enough time to like, hasn't had any time to work on his defense, let's say. So who is going to come with the game plan? And no one had that game plan. No one had done that homework, and looked like this guy did that homework. Can you tell me more Yeah. about this guy, please? Dude, I was just absolutely blown away with this guy's performance. No one expected him to just put out Rashid Gujar. And again, all love to Rashid Gujar. Like, love that guy. He's a very sweet guy, very good wrestler, very good fighter. And again, he has such a bright future in the sport. I hope he keeps fighting, and I hope he keeps fighting. I'm sure he will. But my God, this was just so unexpected. This was such a great moment by Sadiqullah. I mean, whew, like, so this guy Sadiqullah was kind of the dark horse of the division. He just kept, winning fights. People were saying maybe he's been on the easier end of the bracket, so to speak, because jo Rashid Gujjar ki bracket ki side thi, that was a tough one. And you see, like, Rashid landed. Well, I don't think that's the finish. Actually, Omar's just gonna find the finish. But jo Rashid Gujjar ki side ki jo Right, second round. bracket thi, this was, by the way, one of the most stacked divisions, because we had Kashif Ali Qureshi, Hamza Yeah. Jazz, which was like, that's a final, like, easily any day of the week, right? And then Hamza Yeah, that was Jazz, great. yeah, and Hamza Jazz knocks Yeah. out Kashif Ali. Then we go to Hamza Jazz versus Sajjad Ali. There. Sajjad Ali, yeah, there Mhm. we go. Sajjad Ali defeats Yeah. Hamza Jazz, and yeah, look at that. That wasn't good. Good takedown or a good decision on where to land, and Rashid immediately went out. Nasir came a little bit late. That down Yeah. for us, if Now, you can go because back, Omar, so Uloomi can just do that. Yeah. so what basically, just go a little more back where he starts the takedown, so I can talk about it. I've forgotten how this exchange was initiated, but it felt like Rashid was standing in front of him for a while, like sitting on his knees in front of him, and yeah, there you go. He goes good sprawl, goes with the there. See, he just sat down there. He sat down, tried. I think he tried to go for a fireman throw, but that was a beautiful. Again, jumps on top of him. Instead of fighting the hand, Rashid just tried to take him down and slam his way around. And this was a really tight guillotine. Looked like a power guillotine, because his armor is way too deep. But I think this was. I wasn't able to see it properly if it was an arm in guillotine, or was it a power guillotine. And no, that was a power guillotine. Yes. No, that was just a high elbow guillotine, I think. So Yeah, but there, either way, I think it was just it's a that reliance on was. the wrestling. Yeah. Reliance on the wrestling and It not was, enough yes. He was positional relying awareness. way too heavy on his wrestling, and it's just that, I mean, when you're only wrestling, it's different when you're wrestling in MMA, because there's submissions, there's strikes that come at you. uh, what Rashid was doing was, Rashid के पास बस ये था कि मैं इसको टेक डाउन करूंगा, गिराऊंगा और पकड़ के बैठा रहूंगा. Or I was actually expecting this from Sajjad, to be honest, because he's got a very good submission game, and I was thinking that Sajjad would try and submit Rashid Gujar. But when I saw this fight, I was like, man, this is what I wanted Sajjad to do. But this was Yeah. such very, I think that when every single time Rashid was shooting on, I keep forgetting his opponent's name, on him, he would, Sadiqullah. he would feel that Rashid's Siddiqullah, yes, Sadiq would feel Sadiq that Diaz. Rashid's neck is Siddiq Diaz. So Sorry. I felt that Sadiq could see that, like, he could feel that Rashid's neck is kind of like extended, in when he's shooting in, and and I can see that, like, he figured it out in the second round. That's why he was not very, because he was, he transitioned easily into the guillotine, because he felt that the neck is available, it's right there. But what a beautiful transition, man. Letting him take you down, he could have used it as a bait, I don't know, or maybe he capitalized on his mistake, and it was like last minute instinct. But whatever it was pure class.
Yeah, pure class. And yeah, so I think that was the easily one of the upsets of the tournament, in my opinion. Definitely. There was a couple of others. I just want to shout them out real quick. I wrote them down. Hasnan Ahmed knocking out Zaib Hasnan. Hasnan Ahmed, of course, from GB, knocking out Zaib Hasnan, who was just was actually Habibullah knocking out Khizr Rahman. Blew my mind. Sadiqullah, of course, choking out Rashid Gujjar was massive, and then Bushra Akhtar, of course, winning the whole thing. In my opinion, was an upset because it was the first time in MMA, first time she showed up and just absolutely wiped the floor with everyone, and that was really impressive. So those were the upsets, in my opinion. But if you ask me, if I'm being honest, and there's no bias here, this is based on actual on the ground feelers that I was getting throughout and things that I witnessed from my own eyes. I don't know how it was coming across stream में कैसा लग रहा था, लेकिन जहां मैं बैठा हुआ था, who MVP आपने से कहना ही नहीं कहना, but अगर फाइटर का मकसद ये है कि को मैं अपने बारे में बात कराना शुरू करूं, if you want some eyeballs, if you want some traction, if you want to be the guy who talk about and everyone wants to kind of be like, hey, what's that guy? Rehan Udeep, my friend, this was his coming out party. We've known of this guy for years now, you and I, and a lot of people have known of this guy for years. He was at ARY Warriors 1. We called his fight together, actually. Udeep, from, of course, like just knowing of him, he fought 3WL, but then he just, kind of faded out. Reason or the other, he parted ways from a lot of people that he was working in previously. Not important. He got himself a new gym, intrinsic combat unit. He got himself a new set of training partners. He's been working on that grind, and now this was the first time he was competing in NFT. And in my opinion, by the end of NFT, the only thing people could talk about was Rehan Udeep this, Rehan Udeep that, Rehan Udeep the other. That's all they wanted to talk about. And again, props to him. There's a lot of beef I want to get into here, by the way. I hope none of you watching live are vegans, because we're about to get into some beef, baby. So I just wanna kind of get into, like, as Umar's showing us the fight, I'll just kind of walk you over what the beef was here between Rehan and Gul Zamani. Rehan, for all the vegans. For all the vegans, I'm going to stop you there. For all the vegans. Read it and weep, motherfucker. What are you eating? Is that fish? Chicken, my brother. Hey, chicken, my brother. The best kind of meat, my brother. We love the chicken, brother. And Bro, that's only thing we can find here. The only halal thing. Yes, brother. And so Gul Mohammad Zamani's team, Zaman Extreme, one of their fighters faced Rehan in the finals of the Punjab trials. And there was some back and forth there, some trash talk. Fences were hopped. People started pushing. It was like a whole kind of backstory leading into NFT final itself. Zaman's team and Rehan, they just didn't get along. And it was a whole thing, right? Wow. And then, of course, Rehan. And now Rehan is a Pakistani. He's Pakistani by descent. He's Pakistani. He's been living in Pakistan for 5 years. He's studying in medical college here. By all stretch of anyone's imagination, he is a legitimate competitor for NFT. But he brought in a flag which had the American logo on it, the American flag, the Mexico flag, and the Pakistan flag. And suddenly that becomes a problem. Ki yaar, ye kya scene hai? Pakistani fighter hote हुए झंडा वो वहां से आया है यार. वो क्या उसने खुद तो नहीं चुना ना कि मैं पैदा कहाँ हूँ या मेरी lineage क्या है. And Uloomi, it became a big problem, man, throughout the whole tournament. Like, he won the pre-quarter final, he won the quarter final, he reached the semi-final. He was supposed to, who is from Team Underground Wolves, which is, and I'm just stating the facts here. मैं कोई accusations नहीं make कर रहा, but these are just all facts. You can make of it what you will. He was supposed to face Fahim Khan, who is trained at Underground Wolves. Ab jidhar bhi wo train karta hai, he's trained at Underground Wolves. Uska head coach Waqar Haider hai, who is also the president of the Athletic Commission. At the day of the semi-final, no problem. Quarters mein no problem. Semi-final wale din mujhe Athletic Commission aake kehti hai ki Rehan is disqualified. He won't be fighting Fahim finals. And I said, why? And it was because, gee, wo Pakistani nahi hai. And then thank God for Babar Raja, because he put his foot down and he said, what are you guys exactly trying to do here? Rehan's fighting. If you don't want to fight, you don't fight. And then they come up to me in this Indian ground rules, wo to Brave Gym mein training karta hai, right?
And then who's walking out with Fahim? Underground Wolves. The team that's headed by Vakar Haider, who happens to be the president of the Athletic Commission. He's like, thank you. Dude, like, yeah, this is like clear as day bullshit. Like, I'm sorry. And Fahim was a good sport about it. He fought him. They both fought. Rehan finished him, no problem. Rehan immediately went to Fahim and he said, yeah, okay, let's talk, this, that, the other. Easy hai, chill kara rahe the. Meanwhile, Rehan's corner said something like, yeah, bro, you fucking did it, bro. You fucking did it. Underground Wolves thought they were cussing at them. उन्होंने कहा सनु गाल कर दिया वो उधर से भाग and there was a melee, a brawl at the semi-final day between Underground Wolves and 5 guys from Intrinsic Combat Unit. It was nuts. And I don't want to get into too much of that, but you can imagine somebody accidentally punched Avesh Shah. And brother, I don't know if you a lot of people who love Avesh Shah, and they were like, we will fuck these people up. And there was 3 different parties now just trying to get it. Bro, it was crazy. And then Babar, and then even Avesh Shah was like, no, nobody hit me. I'm fine. He was just trying to defuse the situation. Somebody one of the other sides, and but then Babar Raja put his foot down. The whole situation was curtailed. There was no issues. No one was hurt. Thank God. Koi masla nahi bana. You know how it is. Easy scene hai. Generated so much drama and so much interest, and then you go to the final. It's against Zaman's team, the team Rehan's already beefing with, and then he beats him, and then he punches him in the face. From we hate this guy, ye to bahar se aaya hai, ye lad kyun raha hai, to this guy's really good, to oh my god, this guy's really good, to oh my god, this guy's a very good sportsman, because even after he got punched after the bell, he was like, I'm not reacting to this. So I think Rehan went from bad guy to good guy, and I think he's one of our best amateurs now. We have to understand that. Yeah. I think that this was talk about statements. This was a great statement, not only as a sportsman but as an athlete for Rehan. Not only for Rehan, but this was like a feather in the cap for NFT as well. That this makes NFT look good. That wow, you have such amazing athletes. And you know what else made NFT look good? The open invitation by Sajid Kotoshi for everyone. कि अप्रैल में मेरी शादी है, हमजा आ जाओ सारे मेरी शादी में. So I mean, love it. I mean that guy just the open invitation was like the final nail in the coffin for the event. And I think man, jitna marzi, like love it or hate it, the beauty of NFT is that it makes you talk about it. It makes you like question yourself that, do I want to compete in NFT? Do I want to compete in IFT? Do I want to be with these people? Do I not want to? So if someone or something is making you think about them, it means they are doing a great freaking job at whatever they're doing. So big kudos and big shout out and big thank you actually to Babar Raja for doing what he's doing for the sport of mixed martial art. And this is not only for the sport of mixed martial art, but this is for the entire combat sport community, because like you said earlier, a lot of these wrestlers, boxers, karate, taekwondo, whoever these people are, everyone's coming to MMA now because of that prize money. They want to chase that prize money, and they're coming here. They're making the transition, and this is like changing lives. This sport is changing lives. जहाँ पे पाकिस्तान को कहते कि यार क्या तुम लोग यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े करते हो. Now it's becoming, and mark my words, next 5-10 years this will become the most watched sport. I think it still is, after cricket, the most watched, undergroundly most watched sport. MMA is the most watched sport in Pakistan, but people don't accept it, like Abid Bhai said on your podcast, that people watch it but they don't accept it. So yes, once again and over again, good job, kudos, congratulations, and amazing work. And a big shout out to SA Group and Babar Bhai for doing whatever he's doing. It's not only about NFT. He's sponsoring a lot of athletes as well. He has sponsored, I think, Ismail and Babar when they came to Thailand. He sponsored those guys too. So it's a mad respect for him for doing that, man. 100%. And again, we can't state that enough. And then I think just as a closing statement or just as a closing remarks, it's like, हाँ, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, इनमें से बहुत अच्छी भी चीजें हैं, कुछ चीजें बुरी भी हैं. It's not really that big of an issue. अगर हम लोग भी यहाँ बैठ के सिर्फ अच्छी बातें कह रहे हो कि ये बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा, तो हम लोग कभी बेहतर नहीं होंगे. We always need
people who are kind of coming back and saying that, you know, that can still be improved, because there's always stuff that can be improved. But with that There's said, always room for again, improvement. with that said, though, like the people at SA Gardens, Shoaib Afzal Malik, Babur Raja, involved in the team who's getting this stuff done. Hats off to them. Really happy for them, and really happy that they're doing this. They're really, they make it possible for people to pursue MMA as a career option, and they really facilitate the growth of the sport. उससे ज़्यादा मांग सकते हैं यार. They're doing stuff on the ground. They're doing stuff to develop the sport. They're giving opportunities for athletes to compete. This, you know, it's not even in a vacuum. अब बाकी मुल्क में देख लो. Who else is taking a step like this? I'll wait. Who's no one on the ground, in conducting fights, this many fights on this scale has been done before, may never be done again. So salute to them and hats off to them. Things will keep improving. I hope, you know, they at least conversation start करे किसी चीज के बारे में. And again, most important thing is, अगर आप athlete हो, अगर आप fighter हो, आपके पास आवाज है, आप उसे इस्तेमाल करो. आपके पास लफ्ज हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करो. आप ये चीजें अंदर, a lot of fighters reached out for this live stream in particular. इसी तरह आप अपने ख्यालात को आगे लेके जाओ, उनका इजहार करो, उसी तरह चीजें बेहतर होंगी. I'm really glad we have a president like Babur Raja who's able to like literally live stream में आके हमें जवाब दे रहे हैं चीजों के. That's just what we need. We need a dialogue, we need a conversation, we need both sides to speak, give their perspective, and that's how we're going to grow it. And I'd like to say also that Baba Raj is actually still in the chat, and he said, "Thank you guys. Some really good points noted. NFT4 will be better, inshallah." So just a great Babar bhai, love you, this bro. one is for you. Kid, if you ever need any help or assistance, I'm right here. I was asked by, I don't know, I won't name them, but there were some people who asked me that that you were looking for advice for some advisory committee or something. So I was here to help with anything that you need. If there's any suggestion, any advice, and yeah, that's it. And if you want to sponsor me as well, then हमारे दरवाजे, दिल के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं. Shoot your shot. सस्ता शॉट शूट करना जरूरी होता है. And by the way, I want to tell you guys. By the way, I want to tell you guys, Anita is fighting in 2 weeks, 26th of January. She's making her one Lumpini debut against a girl from France, no, from Italy. So a woman from Italy, basically. So it's going to be a banger. Anita is prepped. She was supposed to fight in December, but the fight got cancelled. Now she has a new opponent. So inshallah, 26th January, mark the calendars. अभी literally मैंने अभी it's going down. कैलेंडर ही मार्क किया है. हाँ, क्योंकि अलूमी ये हमें थोड़ा सा गिला है. अनीता की फाइट होके खत्म हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि फाइट हो रही है, नहीं हो रही, क्या हो रहा है. So thank you for letting us know. हमें पीछे बाद में पता लगता है for some reason. मैं और दानी एक दूसरे को डीएम करे, अनीता फॉट क्या हो गया, हम क्या पोस्ट करके. प्रॉब्लम ये होती है ना कि पहले ना हमें पता नहीं होता कि किससे लड़ेगी, ओपोनेंट मिलेगी. हमेशा ये होता है, ओपोनेंट ना लास्ट मिनट में कैंसिल हो गया, ये हो गया. हमने कहा यार किसी को बताते ही नहीं है, जब होगी फाइट तो लोगों को पता चल जाएगा. प्री फाइट हाइप की जरूरत ही नहीं है. लास्ट का भी यही था, हमने कहा ठीक है नहीं बताते हैं. फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं कंफर्म है. लास्ट वीक में आके ट्यूसडे को हम लोगों ने बैंकॉक आना था. ट्यूसडे की रात को, मंडे को सुबह में पता चला भाई आपकी फाइट कैंसिल हो गई. क्यों? ओपोनेंट को जो ना कोई इशू हो गया, लीगल इश्यूज हो गए, शी कैन नॉट कम. So I was like, आज के बाद फिर मैंने बताया नहीं है. फिर मैं अभी खैर मैंने सोचा चलो अभी सब कुछ लॉक हो गया है. I think the girl is in Thailand as well, so it's all good to go. So I was like, let me tell my boys. Yeah, thank you, bro. Thank you. And now we're gonna cover the shit out of that. And जो भी उसके opponent है उसको house arrest पे रखें, bubble wrap में उसको बांध के लड़ ले. मैं बहुत वेट कर रहा हूँ बड़ी देर से, and I really hope she can get it done. Yeah, ये बस लाइव स्ट्रीम का मजा है बॉयज. आई थिंक इसको जरा रेगुलर थिंग बना सकते हैं मेरे ख्याल से. यार इंस्टाग्राम पे भी लाइव स्ट्रीम किया था, याद है? उस पे तुम और मुजाहिद फाइट्स बनाना, तुम मुजाहिद और अब्दुल्ला जी की फाइट्स बनाना शुरू हो गए, मैच मेकिंग शुरू हो गई थी. So it's better if it's unfiltered plus on the mic. बस ये unfiltered / on the mic का शो हो, इसके अलावा किसी और को मत लेके आओ प्लीज. हाँ, नहीं, लाइव ठीक है.
Riverside. If you want more Enjoy. people, I'm not Riverside coming, boys. bro. Riverside boys. बहुत वो थोड़ा शिट शो था नहीं बस रिवरसाइड बॉयज अगली दफा सारी हुडीज पहन के आए अलूमी आप हुडी पहन के आना नेक्स्ट टाइम प्लीज मैं भी अगली बार हुडी पहन के आऊंगा बस डन अलूमी brother तो सही है। thank you so much for the 2 hours bro brother. that you gave us in between a fight problem. this guy's a legend bro abhi his fighter just gave weight he's sitting in a hotel lobby doing this love you bro No worries at all, my bro. हम लोग खाना भी नहीं आया था अभी उसने बाहर गए जैसे तुमने लिंक भेजी ना मैंने कहा चलो वापस कहता है वैसे भी सब बंद हो गया बस कुछ ऑर्डर कर लेते हैं फिर चल के पैदल चल के भागे भागे वापस आए so yeah but man anything for the sport anything for the people watching for the beautiful people that we do it we always do it for them we fight for them we do whatever we're doing for them ye bhi hum unhi ke liye kar rahe hain it's all for these lovely people and Yeah. thank you so much everyone for watching us thank you so much for the support and thank you so much to these two amazing gentlemen right here you know for Thank you. always bringing the best out in every single athlete they make you guys are the ones who are turning athletes into stars man so this one's for you guys love you bro thank you मैं bro बस कहता no सारे thank you fighters for को कि हमारे बस मैं कहता बस हमारे कोलैब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहे हमें वो yeah, बहुत जरूरी definitely होती है definitely यार पता है बेशर्मी सारे से fighters ना बेशर्मी से fighters का नो पता है फायदा fighters को होगा because you guys have more viewers than the fighters ठीक है तो उनको तुम लोगों की वजह से उनको जो है ना और भी followers मिलेंगे तो ladies and gentlemen ये मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा अगर ऑन द माइक वाले आपको कोई भी किसी चीज़ की भी कोलैब रिक्वेस्ट भेजें तो उसको एक्सेप्ट करें क्योंकि उससे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपकी प्रोफाइल की व्यूअरशिप बढ़ेगी जिससे आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे उसका आपको फायदा है इनको कोई फायदा नहीं है इंसान के बच्चे बनो बंदे दे पुत्र बन जाओ और काम करो it's okay love you bro thank you so much जो बात है just as a parting note people like you people like so many other fighters who have come on and come on the mic and just talk to us without anything in return you guys have built this platform for us so the least we can do is try and pay thank you for helping us build this Yes, thank and you. most importantly and the last thank you of the day is to Mr. Umar Fassi Bashir for coming out here doing this shit from Cyprus thank you so much I had to do it love from you boys Kratos' birthland yes sir ये तो Cypriot connection unstoppable है यहाँ पे बस fit है I but think also अब like to बंद thank everyone करते for who came on the live stream yeah I just want to thank everyone for the live stream because we have Baba Raja still here Rehan Ehsan who's also from the judges panel who's on this live stream as well Ehsan. Salman Butt who commented on every sorry, man my I just want to apologies. give a quick shout out to Salman Yeah. Butt for this guy has improved so much man respect to this guy for Mm. improving so much you can see that he puts Love in the him. work ऐसा लगता है कि शीशे में बैठ के है ना हमेशा कमेंट्री कर रहा होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है कि हर वीकेंड पे आज इस वीकेंड पे मैंने 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है and it shows that this guy has been putting in the work his you know he's taken his job very seriously so respect to this guy for sure and yeah just really fun live stream this was NFT we got a lot more stuff coming up to international fight show and lagi hai unki bhi live streams karenge sab karenge just one thing I want to to all of you watching stay tuned keep sharing keep spreading the word this shit's gonna catch fire it's gonna be overnight hum ek din uthenge aur samne hum dekhenge oh shit ye to sab dekh rahe hain and all of that get on the bandwagon before that and again appreciate you all for watching thank you so much brother Uloomi thank you so much brother Umar Fassi and thank you all so much for watching until next in the Riverside boys that's not a thing this has been the weigh-in this has been the weigh-in this has been weigh-in unfiltered and until next time keep it tight talk to you soon Wait, end हो रहा है अच्छा नहीं हो